यूट्यूब और वेब लिंक के साथ दिखलाया जा रहा है, क्योंकि इसकी सूचना राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की तरफ से और भी जगह भेजी गई थी। तो जो लोग जुड़े हैं अभी, वो कई लोग हैं और कई लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो हम शुरुआत 5 मिनट बाद करेंगे, लेकिन उसके पहले तब तक हम अपने जो विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच में मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि पहले उनका एक फ्लोरल वेलकम कर दें और इससे हम अनौपचारिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा प्रोफेसर श्री ए.के. श्रीवास्तव जी से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और डिप्टी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, कि आज हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर अरुण पांडे जी का, जो कि वाइस चांसलर हैं भोपाल यूनिवर्सिटी में और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं बॉटनी के, ये हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, जो न सिर्फ एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं, बल्कि इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं और एकेडमी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एकेडमी का एक पुरस्कार है, रिलायंस अवार्ड, उससे भी सम्मानित हैं। और साथ ही साथ आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च में भी कार्य कर चुके हैं और अभी आईसीजी में न्यू दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आज इसी मौके पे हमारे साथ हमारे ट्रेजरर और प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव जी, जो कि जूलॉजी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे हैं और अभी हमारे यहाँ न सिर्फ ट्रेजरर के रूप में हैं, बल्कि मैनेजिंग एडिटर भी हैं एकेडमी के जर्नल्स के, और साथ ही साथ और भी कई चीज़ों को, जैसे विज्ञान संचार कार्यक्रमों को देखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर टंडन से कि कृपया सर को सम्मानित करें। डॉक्टर पवित्रा टंडन, प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव जी। अरे ठीक। और हम लोग के बीच एक और पर्यावरणविद मौजूद हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, प्रोफेसर डी.के. चौहान सर, जो कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं और लगातार कार्यरत हैं। आप हमारे यहाँ एक और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, उसके भी अधिकारी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पवित्रा से कि कृपया डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. चौहान का भी स्वागत करें। इसके साथ ही हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, जहाँ से बच्चे अभी आ रहे हैं और लगातार अभी बैठ ही रहे हैं बच्चे, इसीलिए हम 4-5 मिनट बाद शुरुआत करने की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी बच्चे आ रहे हैं। जो बच्चे बैठे हैं, एक एक सीट छोड़ के बैठे, एक एक सीट छोड़ के बैठे। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को रखना है, इसलिए कोशिश करें कि एक एक सीट छोड़ के बैठे। इधर भी जो बच्चे बैठे हैं, इधर से भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ और इधर भी बैठ जाओ, लेकिन सब लोग एक एक सीट बीच में छोड़ के बैठे प्लीज। सभी लोग एक एक सीट छोड़कर बैठे। पीछे भी बच्चों, सब लोग एक एक सीट छोड़ के बैठो, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। दोनों तरफ जगह है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ जगह है। थोड़ा और बल्कि पीछे तुम लोग बैठोगे तो साफ साफ दिखाई देगा, कोई छिप तो नहीं रहा है, व्यू है, दिख रहा है ना। क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ।
ये सब लोग का दिख रहा है। देखिए, इसके साथ ही हम लोग के अब धीरे धीरे हॉल भी भरता ही जा रहा है। साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूं बच्चों को कि हमारे साथ जो लोग वेब पे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग जो अभी दिख रहे हैं, मैं उनके विषय में भी बताना चाहूंगा। अभी हमारे जो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड ओवर नोन है, प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी, वो भी दिख रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। उनके अलावा दूसरे बहुत ही विद्वान और सीएसआईआर के कई इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर रह चुके प्रोफेसर अमित घोष जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे चीफ एडिटर हैं प्रोसीडिंग्स के यहाँ के, और पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी आपको दिख रही हैं प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी। आज एनवायरमेंटल डे की बात हम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस की ये विद्वान हैं, वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट हैं, बीएचयू के एनवायरमेंटल साइंस की प्रोफेसर हेड रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में डीन हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर हैं प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी। और और भी हमें दिख रहे हैं, जैसे प्रोफेसर सुचित्रा बनर्जी जी दिख रही हैं, जो सीएसआईआर सी मैप है लखनऊ में, उसमें चीफ साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही और भी लोग जुड़ने वाले हैं, मुश्किल से 2-4-5 मिनट के अंदर प्रोफेसर मंजू शर्मा जी जुड़ने जा रही हैं। अभी उनके असिस्टेंट से बात हो गई है, वो जुड़ने जा रही हैं, जो इस एकेडमी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। ये तमाम जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें जो नासिक की जो न्यू इनिशिएटिव्स के कार्यक्रम होते हैं वो सब उनके आइडिया के हिसाब से होते हैं और उन्हीं के द्वारा उसकी पूरी प्लानिंग भी होती है। और प्रोफेसर मंजू शर्मा जी इस अकादमी से लगभग 40 सालों से लगातार जुड़ी हुई है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी रह चुकी हैं, और भी कई तमाम इंस्टीट्यूट्स की किसी न किसी रूप में वो अधिकारी रह चुकी हैं, सलाहकार रह चुकी हैं, और पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं। तो इस तरह से कई लोग जुड़ रहे हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन तब तक चूंकि बच्चे या आप सभी नए हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया आपको एकेडमी के बारे में देना चाहेंगे। नीरज, प्रोफेसर बेलारे को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। प्रोफेसर बेलारे को। अच्छा, सॉरी सर, वो असल में इसमें नहीं दिख रहे थे इसलिए मैंने। प्रोफेसर बेलारे सर भी जुड़ गए हैं। हाँ, प्रोफेसर बेलारे सर भी आ चुके हैं। आप आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी आउट स्टेशन हैं और वर्ल्ड नोन साइंटिस्टों में से हैं। तो आपके सामने मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों, जितने लोग जुड़े हुए हैं इस राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की तरफ से, वो आपको देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं, और आप भी उनको देख सकेंगे। जितने लोग, जब जब हम ये स्लाइड्स खत्म करेंगे तो करीब करीब सबका चेहरा सामने आ जाएगा, तो आप भी उनको देख सकेंगे। तो ये हाइब्रिड मोड में जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप देश विदेश से लोगों को देख रहे हैं और आपको वो भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा और मैं संक्षेप में, जब तक हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, और भी कई लोग जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ। प्रोफेसर आरसी धीमन साहब भी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर सरोज के बारिक जी ये भी जुड़ गए हैं, जो सीएसआईआर एनबीआरआई के डायरेक्टर हैं। बहुत ही प्लांट साइंसेज और इसके बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, और साथ ही साथ इस एकेडमी के अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अनेकानेक साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और अभी और जुड़ेंगे। तो मैं अभी 5 मिनट के अंदर अब शुरू करूंगा, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को एकेडमी के विषय में दे दूं। इस अकादमी का स्थापना 1930 में हुई थी और ये प्राचीनतम विज्ञान अकादमियों में से एक है।
और ऐसे राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान अकादमियां सिर्फ और 2 हैं, इसके अलावा एक दिल्ली में और एक बेंगलोर में। इन 2 की स्थापना, इस अकादमी की स्थापना और दिल्ली में जो अकादमी है उस अकादमी का स्थापना, दोनों की स्थापना एक ही व्यक्ति के मुहिम से शुरू हुई। उनका नाम प्रोफेसर मेघनाथ साहा था। वो न सिर्फ फिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, बल्कि वो उतने ही बड़े पैट्रियट थे और देश हित के लिए, कार्यों के लिए वो कटिबद्ध थे। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस देश को, समाज को विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए और विज्ञान के द्वारा समाज की समस्याओं को हल कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत से कार्यक्रम किए। उनमें से ही एक कार्यक्रम ये था, इस विज्ञान अकादमी की स्थापना, जिसको उन्होंने 1930 में किया, जब वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हेड हुआ करते थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के। और आप लोगों को ये भी जानकर खुशी होगी बच्चों कि सर सीवी रमन का तो नाम आपने सुना है? सुना है कि नहीं? उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है? बहुत बड़े विद्वान थे वो भी। उनके ही बराबर विद्वान मेघनाथ साहब भी थे और उनको नोबेल पुरस्कार न मिलने का कुछ कारण था, लेकिन 7 बार उन्हें नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के। न मिला था क्यों? क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश साम्राज्य था, हम लोग गुलाम थे और ब्रिटिशर्स को ये अच्छा नहीं लगता था कि उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कोई मुहिम ले, और वो भी ऐसा वैज्ञानिक। और प्रोफेसर मेघनाथ साहब बाघा जतिन, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसके कारण से बार बार उनका शायद नोबेल पुरस्कार नामित होता था लेकिन दिया नहीं जाता था। तो ये स्थिति थी। अब उसके विषय में बहुत स्पष्ट बताना तो मुश्किल है, मैं कदाचित ही कह सकता हूं, क्योंकि ये हर तरह से वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया 7 बार नामित होने के बाद भी। आइंस्टीन ने उनके बारे में लिखा था, आइंस्टीन का नाम तो आप जानते हैं ना? आइंस्टीन ने उनके बारे में लिखा था कि वी कैनॉट इमेजिन थर्मल आयोनाइजेशन फिजिक्स विदाउट साह। ये आइंस्टीन का लेटर के वर्ड्स है। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक अगर किसी वैज्ञानिक के बारे में ये कह रहा है और उसको नोबेल पुरस्कार ना मिला हो, तो इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो ऐसे वैज्ञानिक ने, और साथ ही साथ उस समय के जो इलाहाबाद के और भी मूर्धन्य विद्वान थे, जैसे प्रोफेसर एन.आर. धर, प्रोफेसर बहल, प्रोफेसर डी.आर. भट्टाचार्य, इन सभी लोगों ने, प्रोफेसर बीरबल साहनी, उनका तो नाम सुना है ना, बीरबल साहनी का? तो इन सभी लोगों ने उस समय मिलकर इस अकादमी की स्थापना 1930 में की और ये पहली एकेडमी हुई। और उस समय इसका नाम कुछ और था, यूनाइटेड एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसका नाम बदल के बाद में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया किया गया 5 दिसंबर 1936 को। नेक्स्ट। और शाह साहब ने स्थापना के समय कहा था कि एन एकेडमी ऑफ साइंस कैन डू ए ग्रेट डील बाय एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन, undertaking particular problems, and bringing out scientific workers in various fields for discussion and cooperative research. But the main function of the academy should be towards cultural improvement to by contribution of human knowledge. तो ये जो कल्चरल इंप्रूवमेंट की बात उन्होंने की, क्यों की? 1930 में आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को पता होगा कि कितनी रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स यहां पर था। पता है कि नहीं पता है? लोग आदमी की बलि दे दिया करते थे कुछ सोच के कि हमें ये मिल जाएगा, इतना ऑर्थोडॉक्स था। आज भी है, काफी हद तक है, लेकिन बहुत कम हो चुका है। तो इस ऑर्थोडॉक्स को खत्म करने के लिए और सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विज्ञान की तरक्की पे, विज्ञान की उन्नति पे प्रोफेसर मेघनाथ साह एवं उस समय के ऐसे वैज्ञानिकों ने जोर दिया, ताकि हम किसी भी बात के विषय में सोच सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि वैज्ञानिक सोच हमेशा ये बताती है
कि हमको सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना चाहिए जो सही है, जिसकी सत्यता है। और इस बात को मेघनाथ शाह एवं उस समय के अन्य वैज्ञानिकों ने काफी आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, ये देखिए शुरुआत की बिल्डिंग है एकेडमी की। ये बिल्डिंग यहाँ नहीं हुआ करती थी, ये बहुत छोटी सी बिल्डिंग होती थी। इस बिल्डिंग में भी हमें सौभाग्य मिला है कि हमने यहाँ भी काम किया है, इस बिल्डिंग में भी, और 7-8 साल काम किया है इस बिल्डिंग में भी। नेक्स्ट, और ये लोग देखिए प्रोफेसर मेघनाथ साहब, बिरबल साहनी, आप देख रहे हैं डी.आर. भट्टाचार्य, नील रतन धर जी, इन सबको आप देख रहे हैं। ये सब उन शुरुआत के वैज्ञानिकों में से हैं जिन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और रॉयल सोसाइटी के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, और ये एकेडमी का क्रमशः जो विकास होता गया, ये उसकी सीढ़ियां हैं। गोल्डन जुबली बनाया गया एकेडमी का, ये 1980 में। सिल्वर जुबली जो बनाया गया था 1955 में। उसके बाद 1980 में गोल्डन जुबली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायमंड जुबली बनाया गया 1991 में, और उस समय महामहिम राष्ट्रपति शामिल थे हम लोग के प्रोग्राम में। नेक्स्ट, फिर उसके बाद प्लैटिनम जुबली बनाया गया। प्लैटिनम जुबली का ये फंक्शन यहीं पे इलाहाबाद में हुआ था, ये MNIT के ऑडिटोरियम में। और इसमें भी उस समय के महामहिम राष्ट्रपति, आपने सबने नाम भी सुना होगा क्योंकि बच्चों के बीच बहुत प्रचलित थे, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम जी, वो आए थे। और उन्होंने, और भी कई वैज्ञानिक उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, तो सिल्वर जुबली से लेकर अब तक का विकास एकेडमी का काफी रहा है, और हम लोगों ने काफी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एकेडमी ने बहुत तरक्की की है। और आज के डेट में नेक्स्ट, ये जिस बिल्डिंग में हम लोग उपस्थित हैं, नेक्स्ट, और आज के डेट में अगर आप देखें तो 1800 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं, और 1800 से ज्यादा हम लोग के फेलोज भी हैं। हेलो, नमस्कार। दो मिनट रुक जाइएगा अभी बीच में। और अभी हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो प्रोफेसर अजय घटक जी हैं। ये भी IIT दिल्ली के बहुत ही बड़े विद्वान, लाइट और इस पे इनकी हस्ती है, और इन्होंने एक नहीं अनेक बुक्स लिखे हैं जो कि बहुत हायर स्टडीज में वर्ल्ड ओवर चलती हैं। साथ ही साथ बहुत से मतलब शोध भी प्रकाशित किए हैं। और इनके ठीक पहले जो हमारे पास प्रेसिडेंट जो थे या हैं कह लीजिए, प्रोफेसर जी पद्मनाभन सर, वो डायरेक्टर रह चुके हैं। IISc का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, टाटा ने इसकी स्थापना की थी, उसके वो डायरेक्टर रह चुके हैं। और अभी मधुलिका अग्रवाल जी, मैंने आपको बताया कि वो अभी हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर हैं। और प्रोफेसर UC श्रीवास्तव जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे ट्रेजरर हैं। नेक्स्ट, एकेडमी ने पिछले कई वर्षों में लगातार कार्य करते हुए 22 चैप्टर बनाए हैं, और ऑल ओवर इंडिया ये 22 चैप्टर लोकेटेड हैं, आप देख सकते हैं। और इन सभी 22 चैप्टर्स से तमाम हमारे बहुत डिस्टिंग्विश्ड फेलोज और मेंबर्स अटैच्ड हैं, और वो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के वो अनवरत सेवारत है। और आपको एक उदाहरण देते हैं, अभी सामने हमारे बैठे हैं प्रोफेसर अनुराग पांडे जी। आप भोपाल यूनिवर्सिटी में हैं, भोपाल में हैं, वहाँ पर एक दूसरी यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसके वाइस चांसलर हैं, और हमारे भोपाल चैप्टर के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक, और तमाम कार्यक्रम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, तो एकेडमी जो है प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स, काउंसिल, फेलोज, मेंबर्स, सबके सलाह पर चलती है। और पिछले लगभग 2 दशकों में हम लोगों ने 22 चैप्टर, 3 रिवर गैलरीज, और इसके अलावा अनेक साइंस और सोसाइटी के भी सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो कि मोर देन, अगर सबको अगर हम गिन लें तो वो 50 से ऊपर होंगे।
लेकिन मैंने साइंस सोसाइटी के सेंटर्स का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। जो चैप्टर्स और रिवर गैलरीज है, अगर उसको भी आप मिला लीजिए तो एकेडमी के हेडक्वार्टर को लेते हुए पूरे 26 सेंटर्स एकेडमी चलाती है, जो कि आसान बात नहीं है, क्योंकि इससे पूरा विश्व हम लोग से जुड़ता है। नेक्स्ट। और अब मैं जिस चीजों पे आने जा रहा हूं उस पे मैं बाद में आऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर मंजू शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। हमारे पूर्व जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर परमजीत खुराना जी भी जुड़ गई हैं। हम सबका स्वागत करते हुए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा इसको आप देखिए, अब सबका काफी लोग दिख रहे हैं इस पे। कुछ लोगों के चेहरे आपको नहीं दिख पा रहे हैं, कुछ के दिख रहे हैं। हाँ कौन? हाँ, वो मैडम दिख नहीं रही है अभी। हेलो। हाँ please। मेरा आपने कर दिया म्यूट? म्यूटेड हो गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम लोग अब प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं मैडम, आप कहीं वेट कर रहे थे। और भी कई लोग जुड़ गए हैं, हम लोग के काउंसिल के और डिस्टिंग्विश्ड फेलोज कई लोग जुड़ गए हैं। तो हम लोग अब प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और पहला जो इसके पहले कि हम शुरुआत करें, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर आए हुए हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं, वो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं नाम लेता जा रहा हूँ हमारे डिस्टिंग्विश्ड फेलोज में से एक, और हमारे चैप्टर के भोपाल चैप्टर के बहुत सक्रिय फेलो, साथ ही साथ वाइस चांसलर वहां पर भोपाल में ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। मैं सर आपसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। प्रोफेसर अरुण पांडे जी। हमारे दूसरे प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव जी जो ट्रेजरर हैं, उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। और हमारे रिलायंस अवार्डी रह चुके डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। सर यस। तो अनौपचारिक स्वागत तो हो चुका है, तो आज हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं इस स्वागत उद्बोधन से, वेलकम एड्रेस से। और इसके लिए मैं परिचय पहले ही दे चुका हूं प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव जी का। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया फॉर्मली वेलकम करें सर। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच मुझे ये काम देने के लिए। मुझे आप सभी लोगों का वेलकम करना है। सबसे पहले प्रोफेसर मंजू शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही एकेडमी में। आप इस एकेडमी के आइकॉन हैं और हम लोगों का जो मार्गदर्शन है वो आपके द्वारा हमेशा मिलता रहता है। और अगर हम लोगों ने जो भी काम किया है या करते हैं वो आप के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है या जो भी सजेशन दिया जाता है उसको मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काउंसिल मेंबर प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेशन मतलब इलाहाबाद में जो हैं। और दूसरे जो हैं प्रोफेसर बारिक हैं, बिलारे हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे के हैं, और ये जीएस हैं आउट स्टेशन। इसके साथ साथ जो है प्रोफेसर अरुण पांडे जो कि वाइस चांसलर हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, और जितेंद्र कुमार ठाकुर जी हैं जो कि साइंटिस्ट हैं
और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च न्यू दिल्ली से आए हुए हैं। और प्रोफेसर अमित घोष जी भी हमको दिख रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी के चौहान हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि काउंसिल मेंबर्स हैं और एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और धन्यवाद का कार्यक्रम बाद में आएगा, लेकिन इस समय मैं उनको वेलकम कर रहा हूं कि आप एकेडमी में आए हैं। और जो ये 5 तारीख है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये दिन प्रतिदिन मनाया जाना चाहिए, या प्रतिदिन याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है या एनवायरनमेंट क्या होता है। इस बार का जो थीम दिया गया है ओनली वन अर्थ, और ये बिल्कुल सही है कि चाहे वो अर्थ की बात करें या स्काई के बारे में बात करें, वो केवल एक होती है। स्वीडन इस समय इंटरनेशनल कांग्रेस कर रहा है जो कि ओनली वन अर्थ पर है। और ये हम लोग आज का दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं कि जो क्लाइमेट में क्राइसिस है उसको क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, उसको इनकरेज करने के लिए उसको सेलिब्रेट करते हैं। 1973 से यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को करने का जो बीड़ा उठाया था, उसके अंदर इस समय चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या और बहुत सारे जो पोल्यूशन के इफेक्ट हैं इन्वायरमेंट पर, वो बहुत ज़रूरी है कि अपने इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सीएफसी की बात करें, मीथेन की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, ये सभी जो है मिलके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर इलाहाबाद में, दिल्ली में, भोपाल में, बहुत सारी जगहों पे टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हुआ तो क्या हालत होती है अगर जब 48 के ऊपर होते हैं टेम्परेचर। और अगर 50 डिग्री पर है तो 50 डिग्री पर आप अपने घर की टंकी के पानी को हाथ से टच नहीं कर सकते, आपका हाथ जल जाएगा। और बाहर अगर आप हैं, घर के बाहर निकले हुए हैं और आप देखिए जो 46-48 डिग्री पे टेम्परेचर है, जो कि 1 डिग्री या 1.65 और जो बढ़ते जा रहे हैं, आप कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आदमी सरवाइव करना आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप 5 मिनट तक, 10 मिनट तक 48 या 50 डिग्री या उसके बाद प्लस पे आप बाहर खड़े हो जाएं, तो जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है, वो रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। जो अमेरिका कह रहा है कि 950 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट उसको हम लोगों को लगाना है। आप ध्यान रखिए कि ये 950 मिलियन हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट को लगाने की बात है, वो धीरे धीरे हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज को अगर अरेस्ट करना है तो हमारे पास केवल एक ही चीज़ बची हुई है कि हम अपने टेम्परेचर को कितना कम कर सकें, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
और हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर होने पे एनिमल का और ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि होता है कि हर साल काफी लोग जो डेथ हो जाती है, लोगों को पता नहीं लगता। स्किन के जो कैंसर है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वो केवल ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर की वजह से होता जा रहा है। जो इस समय ओनली वन अर्थ टॉपिक दिया गया है, ये स्वीडन इसको सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है। इसके पहले 2021 में इकोसिस्टम और के बारे में जो बात हुई थी उसको पाकिस्तान को दिया गया था कि आप जो है इसको सेलिब्रेट करिए या पूरे कंट्री के अंदर सेलिब्रेट करिए। इस दिन में रिस्टोरेशन की बात हम लोग कर रहे थे लास्ट ईयर, और उसके पहले टाइम फॉर नेचर 2020 के अंदर इसके जो टॉपिक थे वो दिए गए थे। और 1917 से लगातार 1973 से लगातार एक टॉपिक दिया जा रहा है जिससे कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करें। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जो पेड़ हम लोग लगा भी रहे हैं उसको ये देखना कि नेक्स्ट ईयर उन पेड़ का हश्र क्या है, या वो पेड़ सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस दिन के लिए जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर हैं, मैं बहुत लोगों के नाम लेना मैं भूल गया हूँ, या मतलब बोलने में वो छूट जाता है। जैसे कि डी के चौहान को हमने कहा कि हमेशा इनको नमस्कार करता हूँ, किसी वजह से नमस्कार करता हूँ। जो काम ये कर रहे हैं या करते हैं वो इतना अच्छा काम है कि जिससे कि मुझे नमस्कार करना पड़ता है, और हर जगह उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेसर अमित घोष जी बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैंने उनको देखा। प्रोफेसर मंजू शर्मा जी के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी जितने भी काउंसिल के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको मैं एक तरीके से अपनी तरफ से, एकेडमी की तरफ से, इस दिन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बताया कि धन्यवाद का कार्यक्रम अंत में होगा। इसके साथ साथ हमारे जो थीमेटिक एड्रेस हैं उसमें प्रोफेसर अरुण पांडे जी हैं और जितेंद्र कुमार ठाकुर जी हैं। ये दोनों लोग एड्रेस देंगे, अपना एड्रेस करेंगे, और साथ में इनके जो अवार्ड हैं बायोडायवर्सिटी पे, तो वो अवार्ड भी इनको दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार फिर जितने स्टूडेंट हैं और जैसे कि नीरज कुमार ने जितनी बातें बताई हैं उनको मैं रिपीट न करके, बार बार न कह के, मैं आप सबको आपका स्वागत करता हूँ। और मैं श्योर हूँ कि कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से जो चीज़ बताई जा रही है। और कोशिश करिए कि अपने इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को हम नहीं बचा पाएंगे तो कुछ दिन बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने आप लोग को बहुत संक्षेप में न सिर्फ स्वागत उद्बोधन दिया, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि हम क्यों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। लेकिन आप लोगों को उत्सुकता होगी कुछ और भी ज्यादा जानने की, एनवायरनमेंट के विषय में, पर्यावरण के विषय में, और क्या हमारे ऊपर आपदाएं अभी आई हुई हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या कैसे उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि एक समीक्षात्मक टिप्पणी की जाए, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स किए जाए, और इसके लिए एक एनवायरमेंटलिस्ट से बेहतर कौन हो सकता है। और हमारी जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर जो है प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी, जो बीएचयू में डीन है और एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हेड रह चुकी हैं, उनसे बेहतर इसके लिए कौन होगा। तो हम लोग
की तरफ से उनसे निवेदन है, आग्रह है कि कृपया अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। मैडम प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। डॉक्टर मंजू शर्मा, the past president of the Nasi Academy, Professor Anurag Sharma, the acting president of Nasi, Professor Amit Ghosh, a senior Nasi fellow, and also the taking many other charges. Professor Belere, the General Secretary of Nasi, many others who are there online, and of course the speakers, Professor Pandey, Professor Jiten Thakur, Professor Barik. It's a great pleasure for me to be part of this this World Environment Day celebration, not only because I'm an environmentalist, but also as an individual. Our responsibility is for the environment. So I joined Professor Shrivastava and the entire Nasi community in welcoming you all in this function. You all know that World Environment Day is the biggest international day for the environment, led by United Nations Environmental Program, and it is held annually since it has started in 1974. And it has grown up to be the largest global platform for the environmental outreach. It is celebrated by millions of people across the world. So it is not only celebrated in India, it is all over the world. This year, as said earlier also, it is hosted by Sweden, and the campaign slogan is Only One Earth, with the focus on living sustainably in harmony with nature. Only One Earth slogan was the slogan for the Stockholm Conference also. And that conference has put sustainable development on the global agenda and led the establishment of many programs for the environmental protection by United Nations Environmental Program since then. Just imagine that 50 years later, the same motto is still there. Why? Because our reliance on earth and the stresses we place upon the earth are more evident than that time. It is more visible today. So adopting only one earth as the objective for World Environment Day 2022 emphasizes that time is running out to bring people and nature back into balance. So it is reminding that even after 50 years, we have no time left, you know. That time it was just an alarm. But now it is that time is running out. So we need to come together so that we can have a sustainable life in harmony with nature. This campaign of One Only Earth invites everyone to celebrate our earth through collective action to address one or more aspects of environment. Right now, there are various stresses
But we are running under triple planetary emergency. You all will agree with me. One is climate change, which has just been talked about by Professor Srivastava also. Biodiversity and nature loss. We are looking into that. Each minute, the forests are cut. And pollution and the waste. These three are very important planetary emergency, rather, not stresses. Youth and civil societies can and must take action to transform how we consume and manage the earth and its resources. There are government policies, there are administrative regulations, they are in place, but nothing is happening. So because of that, there is a need of youth as well, all civil societies to look into the matter. You all know, especially those who are ecologists, they all know that we are in the decade of action to meet the Sustainable Development Goals, the UN Decade on Ecosystem Restoration, which is running between 2021 to 2023. And this is gaining momentum all over the world. Earth's climate is already warm by, on an average, by more than 1 degree Celsius. Since pre-industrial times, with significant increase on land, less increase above the oceans, more increase on the land. And as a result, we all feel that seasons are shifting, storms are intensifying, floods, droughts, heat waves, and wildfires are becoming more frequent and devastating. You all, students, you all see the newspapers or television broadcast. You all must be seeing that in your lifetime of 14, 15, or 18 years also, these things are happening. The climate crisis is adding to the pressure on nature as species and the ecosystems struggle to adapt. Just like it is said for the human being that if temperature goes above 45 degrees Celsius, so the human body is also not able to adapt to it. So our homeostasis is disturbed. So just imagine for plants who are outdoors, they also struggle to adapt in such situation. And especially the critical habitats from rainforests to wetlands, they are continued to be lost due to the human expansion. We are urbanizing, if we are industrializing, where do we go? We will cut forest, we will cut the natural systems, and then only, expansion can take place, because the living conditions or habitable conditions are only available on our earth. Of course, there are trials going on setting up human colonies on some other planets also. So we are causing deforestation to make way for farming, logging, overfishing. We are doing overfishing also. So our oceans are also, species are on threat. And not only that, we do illegal wildlife trade also. So these are the things which otherwise look smaller, but they have a larger impact on our environment. Air pollution, much of it comes from where? Fossil fuel burning. Caused around more than 7 million premature deaths in a year. It is established. Nutrients from farming, especially, indiscriminate use of the fertilizers, sediment from soil erosion, and discarded plastic
waste are polluting our land, fresh and coastal waters. A latest IPCC report in 2021 shows that sustainable lifestyles and behaviors could reduce our emissions by 40 to 70% in 2050. So, it's individual responsibility that how to live that if in harmony with nature or if not in harmony with nature. So we can also decide on these aspects individually also. Taking Earth's interlinked environment and social challenges require a holistic solution. We cannot think of a solution in one compartment. We need to think with a holistic approach for tackling this particular environmental program, because environment is not restricted to one country or one state. It is free. It can move from one place to other. The air can move from here to there. You leave a pollutant into a water that can reach to some other continent. So there is a need of systemic and transformative changes to answer the Earth call for help. So at the moment, actually, the Earth is calling for the help to man that don't do too much. Now I cannot revert back to earlier positions unless you will help to limit your demands on my resources. So transformative change can induce shifts in world's views and values in addition to the technological, economic, and social inputs. So that is why I'm once again emphasizing this, that it's individual responsibility also to change their behavior, to change their views for the betterment of the environment. It involves innovation, learning and cooperation, adaptation of governance structures, policies, business models, technologies, and diverse knowledge systems. So in fact, when I took so many names, that means the environmental problems to be solved, it requires cross-sectoral planning and integrated approaches to find synergies and manage trade-off in areas. Most important areas, I'm just taking the name, including food. I mean, how our food is produced. If we will use indiscriminately the fertilizers as well as irrigation water, the problem will be there. Mobility, mobility is inducing a lot of pollutants and greenhouse gases into the environment. Construction is also a very energy intense process. Water, energy, ecosystems, and human health. So at the end, I would say that as an individual, raise your voice, advocate for change, start the discussion, ask for action, campaign, spread knowledge what you know, get involved, and make the sustainable choices. This you can do. The young students who are here, they can do and change a lot. So once again, I am congratulating you all on this particular occasion, because this occasion is yearly celebrated to remind us to conserve, to protect, so that we can enjoy our Earth, the only habitable place for a very long time, not only for us, for our lifetime, but for generations to come. Thank you very much for giving this opportunity to me. Thanks a lot. Thank you, madam. You might have heard that
Madam stressed on the integrative and systematic approach. Without the holistic, integrative and systematic approach, it is not possible to cope up with the situation, which is very much alarming. अगर हमको कुछ करना है तो हर स्तर पर प्रयास की जरूरत है, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अगर हर स्तर पर प्रयास नहीं होगा पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा का, तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। ये पूरी चीजें एक एनवायरमेंटलिस्ट की नजर से देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दिनों का विशेष महत्व तब होता है जब हम उसके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। तो थैंक यू मैडम वेरी मच। लेकिन इतनी बातों के बाद ये सवाल उठता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एकेडमी क्या कर रही है, और इस एकेडमी के रोल के विषय में बताना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी और चीजें आप लोगों को फोटोग्राफ्स अभी दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन इस विषय में उससे बेहतर कौन बता सकता है, उनसे बेहतर कौन बता सकता है जो इस अकादमी से लगभग पिछले 40 वर्षों से लगातार जुड़ी हुई है। न सिर्फ बल्कि उन्होंने कितने प्रोग्राम्स एकेडमी में आज तक चलाए हैं, शायद इसकी गिनती करना मुश्किल है। हजारों प्रोग्राम इस 40 वर्षों में चले हैं, जिसमें कि नासी न्यू इनिशिएटिव्स और साइंस सोसाइटी का प्रोग्राम और वुमेन प्रोग्राम, ये सभी प्रमुख प्रोग्राम हैं जिनके द्वारा हम पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी जुड़े हैं। और इन प्रोग्रामों के तहत मैडम प्रोफेसर मंजू शर्मा जी ने, आदरणीय मैडम ने कोशिश की है कि पूरे समाज को जागृत करें विभिन्न सामाजिक पहलुओं पे। और अकादमी के द्वारा एनवायरमेंटल साइंस के लिए क्लाइमेट चेंज पर की गई संगोष्ठी, पूरे बड़ी बड़ी नदियों के विषय में संरक्षण के लिए बनाए गए जो नदी परियोजनाओं से संबंधित जो गैलरीज बनी हुई हैं, जिन पे कि पूरे बायोम के बारे में बताया जाता है कि आखिर ये नदियां कहां से कैसे जाती हैं, कैसे पॉल्यूट होती हैं, इनकी संरक्षा और सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में। या वाटर से संबंधित जो हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग हुए हैं, 4-5 ब्रेन स्टॉर्मिंग इस विषय में, या वुमेन को, विमेन साइंटिस्ट को जागृत करने के विषय में विभिन्न सामाजिक पहलुओं के बारे में। तो इन सभी में विशेष तौर पर मार्गदर्शन की भूमिका मैडम मंजू शर्मा जी ने निभाई है। और आपको बता दें, उनका संक्षिप्त परिचय हम दे चुके हैं, वो पद्म भूषण है। साथ ही साथ इस देश की बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी रह चुकी हैं और पूरे देश में लगभग 100 से ज्यादा संस्थानों में के उद्धार में, उनके उन्नयन में, उनके विकास में उनकी विशेष भूमिका रही है। तो मैं मैडम से प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस अवसर पर एकेडमीज के रोल के बारे में साथ ही साथ ये बताते हुए, समझिए कि ये ऑलमोस्ट इनॉग्रल एड्रेस है। मैडम प्लीज। Namaskar to all the very distinguished fellows, council members and officials of the academy. My heartfelt greetings to all of you on this occasion of World Environment Day. The theme this year has already been told to you by all the speakers, only one Earth. But how did they describe this one Earth? In the universe are billions of galaxies. In our galaxy are billions of planets. But there is only one Earth, and let's take care of it. So I think about the subject, the theme of the World Environment Day, all my previous speakers, especially Madhuji, has very elaborately described, so I won't go into that. But I also want to say that in our country, the awareness about the
importance of environment has been steadily increasing. I have been watching it for the last 30, 40 years, this phenomena. And today in the country, you see, being a Sunday, we can see the crowd in our auditorium. And not only that, many other organizations in the country are celebrating the World Environment Day, although it's a Sunday. We celebrated on 22nd May the Biodiversity Day. It was a great function, especially the Indian Council of Agriculture Research, the Forestry Research Institute, all of them, they celebrated the Biodiversity Day. When we think of the environment as a whole, and as Madhuji said, and in an integrated way, we think of environment. What do we think of? Earth, flora, fauna, the microbes, and certainly the most important element, human beings themselves. And she very rightly said that the human beings have to take note of this. Unless we will take note of it, nothing can improve, the environment cannot be protected, biodiversity cannot be conserved, and pollution cannot be abated. So it is we, the human beings, are important, most important to tackle this situation. And look at the academy. All the academies in the world, the academies in the country, and our very dear National Academy of Sciences. All of us, all the fellows, all the members, the entire scientific community which is associated with the academy, at different points, we have discussed this whole question of environment. And I'll come to this point in a moment. I also want to say that there are two most important aspects. One is pollution, that is pollution abatement of all types, whether it is air, it is water, it is noise, etc., etc. And the second important issue, about which I'll mention in a moment, is the climate change, which Madhu also said is one of the most crucial factors. And unless we will take note of, Dr. U.C. Srivastava very nicely explained that higher temperatures, how disastrous they can be for the human beings, for the animals, for the fishes, for the plants, for everybody. And he explained it at different temperatures, how things are happening. So in general, the two earlier speakers have given a very good background of why we celebrate the World Environment Day. And I must congratulate both Madhulika Agarwalji and UC Srivastava that their welcome as well as the introductory remarks were very useful. In fact, I thought most of the things they have already said, which we want to discuss, or which we want to have as a background for this whole celebration of today. Coming to NASI, and as Neeraj has said, NASI is the oldest of the Science Academy. Certainly, we are all very proud that our founder was Professor Meghnad Saha, one of the most eminent scientists of this country. Academy has a very major program on science communication. And before coming to the environment, I must say that even in the science communication program, in the rural areas, when we go and speak to them, and when the academy officials and the experts go and meet the rural people, there is a discussion about the cleanliness, about the sanitary conditions, about the availability of water, about conservation of water, about conserving the plant species, and also all about their social behavior. So the program of science communication
also is very important from the viewpoint of protecting our environment. I think all of you would agree with me on this aspect. The Academy also started with the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants at that time. I can see Suchitra is there. There was a very big program of starting bio-villages. And why did we set up those bio-villages? The reason was, an academy was associated with it. The reason was that we wanted to create awareness about the bio world, which means both the biodiversity, the ecosystem, and the environment, everything together. And in the bio villages, we had many speakers who went and gave lectures. There were academy officials, including Neeraj and Santosh and Archana, and all of them, they went and spoke in the rural areas. So, my dear friends, what I want to tell you is that the National Academy has dealt with the environment issue at the social level, in particular in the rural areas. And that is the most important contribution I feel of the Academy. In addition to organizing this very great event in the Academy headquarters, where I get many students from all around areas come, it has played a very significant, a pivotal role in creating awareness about the environment in the rural areas. Now, coming to the academic world, Academy has organized, it every year along with the annual session. The Academy organizes a symposium. A theme of the symposium, 90% is very relevant to the country and very important scientifically. So every year we have a 3 to 4 day session, annual session, and where we have 1.5 day symposium, which is very important from the viewpoint of social development. And NASI keeps in mind always its mandate, which is science and society. So how many symposium we have organized, I can't really tell you. Neeraj would tell you. Biodiversity conservation in Trivandrum. We had on the climate change in Jammu. And when I was president myself, I don't know, many, many years ago, I don't remember when it was. Neeraj, you would know. We were in Tirupati, and the second lecture, my presidential address was on biodiversity conservation. So this is a subject with which I have been very closely associated. It had at one point of time, it became a passion in my life to talk about environment. And I don't know how many lectures I must have given all across India, in the universities, in the research institutes, including Dr. Barik in your institute on the foundation day, one of the lecture I had given, and CMAP again. So my concern has been, and which has been, the Academy has helped me to promote this passion of conserving the environment, protecting the environment, and also protecting the biodiversity to the extent of living in harmony with nature. As Madhu said very nicely, living in harmony with nature. So that is what I would say the Academy has done. The symposiums were organized in Trivandrum, Jammu, as I said, in Allahabad, and Nasi has also had discussion on the pollution question and on the whole question of environment and health. I see Dr. P.K. Seth sitting here, and he's the one who has advocated this theme as a very distinguished fellow of NASI. He has taken up this theme of environment relating to health. And in that context, I must say that NASI very recently has launched a program, NASI ICMR
program, joint program, in which we are going to the villages, we are going to the rural areas, we are going to the semi-urban areas, and to some extent, sometimes even in the urban areas. And we are talking about the awareness of the COVID. And along with that, we talk of the cleanliness, environmental aspects, etc. So NASI very recently has launched this. Again, one more very positive goal of NASI has been it organized Jagrukta Abhiyan along when the nation was observing it as per the directive of the Honorable Prime Minister. The country was observing the Jagrukta Abhiyan in an appropriate behavior for COVID-19. NASI stepped in, and with its meager resources, and I must say very small staff, Neeraj has all the problems when I say that we are going to organize, because he has very little support structure. And we organized more than 32 webinars all over the country about the Jagrukta Abhiyan relating to COVID awareness. Now, in a way, that also relates to environment. To a great extent, when we were talking of COVID-19, we were talking of also keeping the environment clean, our hands clean, keeping the surroundings very clean. So there the question of involving the people comes up. But this much about the role of NASI, but I want to just come back to one very important aspect which Madhuji said, which was about the climate change. And I'm sure all of you read the Times of India, very well-read newspaper. And why I have brought this to you for your notice is just to tell you that even media today is very concerned. The print media, forget about the TV, the print media is very concerned about the conservation of biodiversity, about the protection of the environment, and the whole issue of all the aspects of climate change. And let me tell you, the 4 key climate change markers which have hit the record highest last year, as per the United Nations report. This is the from United Nations report. Extreme weather events cost world about $100 billion. $100 billion. That is the extreme weather conditions. And what are the worrying factors? Concentration of greenhouse gases, which lead to global warming. This is the WMO report. Highest ever global mean sea level, a concern for millions of coastal population. Millions. We have 7,500 kilometer coastline, and the fisheries and the marine life, both fauna and flora. And it is a question of people living along the coastal areas. So the millions of coastal population. And the third important point is the ocean heat, which is affecting the entire marine life. And the last point is ocean acidification, which is threatening the lives of the organisms, and not only organisms, it is also threatening the ecosystem around. That is the worst part of it. We can take care of the organisms, but what about the ecosystem around, which is also getting destroyed because of the ocean acidification. So these were the 4 important points which were brought to the notice by the UN report. And then the climate report 2021, it brings out the state of climate change and environment. And then it says what are those features: temperature, ocean, greenhouse gases, and melting of glaciers. And in our country, in particular because of the Himalayas and the higher mountain ranges, the melting of the glaciers is a very important issue, but it's a very
sad story along with it, because we have so many natural disasters because of this. The landslides, and every year we see hundreds of people dying because of the landslides in Uttarakhand, in Jammu and Kashmir. And when we have this yatra for Badrinath, Kedarnath, you will just find that there is a landslide. Invariably, landslides there. So melting of glaciers is also becoming very important. Then, you know, what is the UN chief made a very bold statement, and he said, fossil fuels are a dead end. Fossil fuels are a dead end. And also, I am very happy to see that news reported in various papers and in various magazines, they are bringing out warning to all the people to take immediate action. As Madhu said, it is just not a lecture we are giving you. It is just not a celebration Nasi is having. It is a message we are all conveying to the general public, to the students, to everybody else, so that it gets conveyed. It should be a chain reaction, that we should all take it very seriously. And immediate action is called for to protect the climate change and the environment and the biodiversity. Coming to the present World Environment Day, yes, I forgot one very important aspect. I think Neeraj has mentioned about Nasi. That is, Nasi also thought of preserving and bringing out the importance of the important river systems of the country. And we decided that we'll do it in a way that people get interested, the students get interested, the children get interested, the tourists get interested in this. And therefore, we created in Prayagraj a Ganga gallery, in Guwahati a Brahmaputra gallery, in Mysore the Kaveri. And all these three rivers are extremely important, not only for giving us water, not only for giving us tourism, a lot of tourism benefits, but the livelihood security of millions and millions of Indians. All these three rivers. So, a very important role of Nasi has been in establishing these river galleries along with the NCSM, the National Council for Science Museum. And Nasi is always grateful to the officials of the museums to collaborate with Nasi and set up these galleries, which have become very important. In fact, in Brahmaputra gallery, we were told that it has become a major tourist attraction. And same thing is Ganga gallery. We have made a replica of Ganga gallery. We took the same to Varanasi, and it was at the request of the Honorable Prime Minister that the replica of Banaras Ganga gallery was set up in Varanasi when we had the meeting of the Pravasi Bharatiya. And you can see the importance. As Neeraj said, nationally and internationally, Nasi wants to spread the message of importance of environment, importance of river galleries, and how we can attract the students to give them the knowledge, scientific, cultural, economic, religious, all these issues the students can understand once they visit the galleries. We have made films there, and you see the films also, and you will be very much interested. I want to really sum up with a very favorite quote of mine, which, I mean, not mine, but I really enjoy reading this, and that is from G.P. Morris. And he says, "Woodman spared that tree, touched not a single bough. In youth, it sheltered me, and I will protect it now." And what does the Atharva Veda say? "O Mother Earth,
let thy bosom be free from sickness and decay. May we, through long life, be active and vigilant and serve thee with devotion. This is from Atharva Veda. And Dr. Barik, if you are here, it is in your office once upon a time when Dr. T.N. Khushu was there. This Atharva Veda quote was on the wall of the room of the in the room of the director, and from there only I copied this shloka. So NBRI has been extremely conscious of protecting the Mother Earth in all the possible ways it can. And finally, when all of us take it very casually when we say, what did our Father of Nations say? But friends, my very dear colleagues from Nasi, I want to request you that please do not take this quote of Mahatma Gandhi lightly or just for the quote of Gandhiji, because the quote is extremely important in the present conditions. The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. And if we have to use our forest judiciously, we have to conserve our biodiversity judiciously, we have to be very careful about the land, which is where the carrying capacity is finishing now because of the increase in population. We have to be very careful about using the water resources, the agricultural crops, everything surrounding us, the entire ecosystem. So we have to, we cannot have greed, because we have to think of our children, what the future generations is going to have. So Neeraj, once again, my heartiest congratulations and all my good wishes to you for organizing this very good event. And I know we have very good speakers who are going to speak today. So thank you very much. Thank you, madam. We are really very much grateful to you, madam, for this a comprehensive awareness and information about not only about the NASI's role in the environmental conservation, but also about the different issues which are concerned and what we can do. We are very much grateful to you, madam. And इस पे मैं एक बात केवल कहना चाहूँगा, मतलब मैडम के लिए मैं क्या तारीफ करूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन इतना सारगर्भित जो अभी मैडम ने अपना पूरा ये बताया है, नासी का रोल हमारे क्लाइमेट चेंज के विषय में, रिवर कंजर्वेशन के विषय में एवं अन्य कई विषयों में, तो मैं समझता हूं कि बच्चों को भी पता चला होगा और विशेषकर बच्चों को और पता चलेगा जब ये इस प्रोग्राम के बाद गंगा गैलरी को विजिट करेंगे। जब आप गंगा गैलरी को विजिट करेंगे, प्रोग्राम के बाद लंच करेंगे और लंच करके गंगा गैलरी को विजिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी कोशिश की गई है और कितना सोचने के बाद और कितना उसको सुनियोजित ढंग से बनाने के बाद मैडम के दिशा निर्देशन में ये गैलरी तैयार हुई है। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू यू मैडम, थैंक यू। और इस विषय पर मैं बस केवल ये कहना चाहूंगा कि आप मशाल जलाती रहें, आप मशाल जलाती रहें, हजारों दिए उम्मीद के अपने आप जल उठेंगे। आप मशाल जलाती रहें, हजारों दिए उम्मीद के अपने आप जल उठेंगे। मुसीबतों से क्या घबराना, मुसीबतों से क्या घबराना, जब आदमी को हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। हम बेस्ट क्रिएचर हैं इस वर्ल्ड के, इस लाइफ के, इस बायोम के, तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन आएगा जब हम मुसीबतों के ऊपर अपना कमांड कर लेंगे। थैंक यू मैडम। अब जो नेक्स्ट सेशन जो शुरू होने जा रहा है वो स्पेसिफिकली थीमेटिक सेशन है
और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इस थीमेटिक सेशन को ले चलने के लिए मैं अपने कोलीग डॉक्टर संतोष शुक्ला जी से कहता हूं कि वो इसको आगे बढ़ाएं। और जो हमारे तीनों अवार्ड लेक्चर्स होने हैं वो इस सेशन में होने हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों से एक गुजारिश है हमारी कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इतने बड़े बड़े लोग आपसे जुड़े हैं, थोड़ा ध्यान से अगर सुनेंगे, कुछ समझेंगे, और अगर 25% भी यहाँ से समझ के जाएंगे तो आपका जीवन भी बेहतर होगा और आप दूसरों को भी बेहतर जीवन अपनाने की आप कोशिश में डालेंगे। थैंक यू डॉक्टर संतोष। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग अभी शुरू से इस कार्यक्रम को सुनते आ रहे हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर हम लोग किस तरह से और क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत में हम लोग अब थीमेटिक एड्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैडम मंजू शर्मा मैडम ने और साथ ही साथ मधुलिका मैडम ने आपको बताया कि हम लोगों का जो ये वर्ष है, इस वर्ष हम ओनली वन अर्थ के स्लोगन के साथ जो फोकस पॉइंट है, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर। तो जो हार्मोनी विद नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ बहुत शुरू से आदिकाल से ही नेचर का अर्थ या प्रकृति का अर्थ या पृथ्वी का अर्थ कभी भी यह नहीं रहा कि केवल पृथ्वी अर्थ, जिसको हम केवल फंडामेंटल अर्थ की बात कर रहे हैं। हमारे नेचर का अर्थ है हमारे जो पंच महाभूता, जिसके द्वारा इस सृष्टि पर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी की उत्पत्ति, यानी कि जो हमारे क्षित जल पावक गगन समीरा, यानी 5 जो फंडामेंटल्स हैं हमारे इस सृष्टि के, जिनको फायर, अर्थ, वाटर, स्काई और एयर, इन्हीं 5 फंडामेंटल से धरती पर सृष्टि की सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, जड़ चेतन, सभी का। और ये हार्मोनी यानी सामंजस्य इन सभी के बीच में, ऐसा नहीं है कि ये हार्मोनी केवल हम अपने साथ बना के रखें। जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, इन सभी में ये 5 तत्व अलग अलग रेशियो में बने पड़ रहते हैं, चाहे वो जैसे सभी के अलग अलग रेशियो के कारण इनकी गुण अलग अलग हो जाते हैं। जो त्रिगुण है हमारे सत्व, रज और तम, ये गुण अलग अलग बेस्ड अपॉन द रेशियो ऑफ दीज 5 फंडामेंटल्स। जैसे कि अगर आकाश तत्व की ज्यादा रेशियो बढ़ जाएगा तो वो हो सकता है कि पक्षी चिड़िया बन जाए, यदि पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति ज्यादा हो जाएगा तो वो धरती पर भारी जीव बन जाए, या जल तत्व की ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो वो एक्वेटिक एनिमल्स बन जाएंगे। लेकिन इन पांचों का जो सामंजस्य है वही त्रिगुण, यानी कि, और वो 5 सामंजस्य जो है वो हमारे सभी जीवों के लिए, जीवधारियों के लिए पित्त, कफ और वात के फॉर्म में सभी में बना रहता है। तो ये हार्मोनी अगर गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये हार्मोनी हम अगर अपने अंदर गड़बड़ कर लेंगे तो हमारी ही केवल डिस्टर्बेंस होगा। अगर हमारे दांत जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में नहीं आते, लेकिन अगर दांत खराब हो जाए तो हमारा लीवर में भी फिर प्रॉब्लम आने लगती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। अगर लीवर प्रॉब्लम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लीवर का काम तो दूसरा है, डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए है, लेकिन वह लीवर गड़बड़ हो जाता है तो हमारे और भी ऑर्गन्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार हमारी इस धरती पर, इस सृष्टि पर भी यदि हम अलग अलग इन रेशियो को, जो हमारा 5 भूतास के हैं जिनको हमने अभी कहा आपसे, उनका रेशियो में जरा भी गड़बड़ी होती है तो पूरी सृष्टि का जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। और जैसा मैडम ने बताया कि हम केवल जो ह्यूमन काइंड हैं, प्राणी हैं, हमारे जो मेन ह्यूमंस हैं, यही इनके अंदर ही एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है जो मैडम ने ग्रीड की बात कही, जिसके कारण से इस पूरे के पूरे सामंजस्य को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम इन सभी चीजों को हमारे मूर्धन्य अनुभवी श्रोताओं को, अनुभवी व्याख्यानों को सुनने के बाद इन चीजों को समझ पाएंगे और आने वाले भविष्य में हम इस समस्या से निदान कर पाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग ये कार्यक्रम जो है हमारे थीमेटिक एड्रेस से रिलेटेड है, और इसमें के अंतर्गत हमारा जो पहला व्याख्यान है वो है अवार्ड लेक्चर इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये अवार्ड लेक्चर इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2007 में एकेडमी ने इसकी स्थापना की थी, और तब से प्रत्येक ईच अल्टरनेट ईयर्स में इस अवार्ड लेक्चर को दिया जाता है, और देश के महान वैज्ञानिकों को जो कि इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जिनका कार्य रहता है उसके अंतर्गत दिया जाता है। कुछ ऐसे अवार्डीज हैं जिनका मैं पहले के अवार्डीज का नाम भी यहाँ पर अगर लेना चाहूंगा, जैसे कि सन 2007 में पहले अवार्डी रहे प्रोफेसर LMS पालनी साहब, और जो कि सीनियर साइंटिफिक एडवाइजर बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट ऑफ उत्तराखंड के रहे हैं। प्रोफेसर JS सिंह, बहुत बड़े वैज्ञानिक BHU के, वह भी इस पुरस्कार के अकेडमी के द्वारा इस लेक्चर अवार्ड के अवार्डी रहे हैं। प्रोफेसर CR गांव
सन 2011 में प्रोफेसर प्रमोद टंडन सर, जो कि वाइस चांसलर रहे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी नेहरू शिलांग के, और बायोटेक पार्क सीईओ, साथ ही साथ हमारी एकेडमी में पिछले लगभग 4 दशकों से अधिक से जुड़े हुए रहे। इसके साथ प्रोफेसर सीएल नौटियाल साहब, जो कि डायरेक्टर एनबीआरआई रहे हैं, उनको 2015 में, प्रोफेसर अनिल के त्रिपाठी, जो डायरेक्टर सीमैप रहे हैं 2017 में, प्रोफेसर एस के बारिक सर, जिनको आज हम दूसरे अवार्ड के लिए सुनेंगे, लेकिन इनको भी 2019 में दिस अवार्ड लेक्चर इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया गया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी क्रम में वर्ष 2021 के लिए हमारे जो अवार्डी हैं प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे, जो कि फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और जैसा कि डॉक्टर नीरज सर ने, प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव सर ने आपको पहले से ही आपका परिचय आप लोगों के बीच उनका करा दिया गया है, तो मैं ज्यादा इनका परिचय की वैसे भी प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे सर, जो कि बताया जैसा सर ने कि वाइस चांसलर रहे महासभा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वर्तमान में, और इससे पूर्व वो फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डीन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहे हैं। और पांडे सर है मोर देन 40 इयर्स, 4 दशकों से ज्यादा उन्होंने रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस में हम सभी को सहयोग दिया है। एंड ही हैज कैरिड आउट नॉट ओनली इन द so many versatile areas, extensive research in the field of especially medicinal plants, taxonomy, molecular systematics, biodiversity conservation, ethnobotany, और he has, सबसे बड़ी बात है सर के बारे में जाना जाता है कि he has described 7 species, new species to the science उन्होंने दिया है। and sir is not only this country, इस देश के लिए नहीं सर, internationally भी famous हैं, और सर is the visiting faculty of different international universities like Vienna, Austria, Korea and Germany। मैं ज्यादा डिटेल में न लेते हुए, वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल, तो मैं तुरंत रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे सर को कि आए और आज आपका यहाँ पर आकर के अपना इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर व्याख्यान दें। आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे सर। Honorable Dr. Manju Sharma ji, Professor Anurag Sharma ji, Dr. Amit Ghosh, Professor P.K. Seth, Dr. Billare, Dr. Madhulika Agrawal, Professor Paramjit Khurana, Dr. S.K. Barik, and all those senior persons sitting in this hall, Professor U.C. Srivastava, Professor D.K. Chauhan, Dr. Jiten Thakur, Dr. Santosh Shukla ji, Dr. A.K. Srivastava, and dear students. Today we are celebrating World Environment Day. In fact, the theme of the 2022 World Environment Day is only one Earth, and the theme focuses on the living sustainability in harmony with nature. And collectively, we have to work to save the environment, to save the earth. Next slide. So at the global scale, we have to conserve the bioresources. Now, for Biodiversity Award, I have selected a topic, Himalayan flowering plants, its diversity. At the outset, I express my deep sense of gratitude to Honorable Dr. Manju Sharma ji and council members of NASI for selecting me for Biodiversity Award. I am greatly honored. And
the idea behind today's lecture is that we are celebrating the World Environment Day. And as far as India is concerned, it is a rich biodiversity zone. We have the ecological or ecosystem diversity, which ranges from sea level to the highest mountainous ranges of the world, hot and arid conditions in the northwest to cold and arid conditions, tropical wet evergreen forest in northeast India and the western Ghats, mangroves of Sundarbans and freshwater bodies. As far as flowering plants are concerned, we can see that there are over 21,000 flowering plants in India. Out of that, over 4,000 species are endemic. And therefore, it is very, very important that we should focus on the endemic plants, especially so that we should conserve them before they vanish forever from this planet. Similarly, as far as gymnosperms are concerned, there are 82 species in India. Out of that, 12 are endemic to India. And similarly, bryophyte, pteridophyte, there are a large number of taxa which need attention of the conservation biologists. As far as endemic vascular plants are concerned, there are, as I mentioned earlier, over 4,000 angiosperms are endemic. And as far as vascular plants are concerned, or pteridophytes are concerned, 66 are endemic to India and 12 gymnosperms, they are endemic. Now, as far as Indian Himalayan region is concerned, nearly 50% of the total flowering plants so far recorded in India, of which 10% flora is endemic. And the region also supports world's richest alpine flora with maximum endemism. Now, taking some of the examples like rhododendrons, it is one of the most fascinating genera with immense horticultural and economic importance. And there are shrubs and small trees, and the smallest species of the rhododendron is 10 to 100 centimeter tall, that is rhododendron nivale. And one thing is very important, that rhododendron arboreum, because of the climatic change, it has been observed that earlier the flowering time was February to mid-March, but now it is 88 to 97 days of early flowering has been recorded within 100 years. So because of the climate change, a lot of changes as far as phenology is concerned. That we are recording not only in rhododendrons but also in a large number of taxa, this phenomena is being observed. If we see only one example like Orchidaceae, the Eastern Himalayan region has about 770 species and Western Himalayan region is 240 species. And we have beautiful orchids starting from Pachyopedilum to Satypedium and others. And these orchids in natural condition, they are growing, and we cannot collect just going in the forested area and collect. The collection is not allowed, but of course one can culture them in by means of tissue culture and others. Now, human dependency on bioresources to make life easier is well known, and we know that because of the anthropogenic activity, biodiversity is being lost. Now, what are the threats to Himalayan biodiversity? There is a global climatic change about which Dr. Manju Sharma Madam has already given a detailed account, that
how climate change is affecting our biodiversity. Then alteration of habitats and land use change, land fragmentation due to road construction and other infrastructure development, and most important, human-induced changes such as biomass harvesting, deforestation, forest fire, all are affecting the biodiversity. And of course, the illegal trade of timber and medicinal and aromatic plants, that is also a threat to the Himalayan biodiversity. Now, about the climate change and its impact on biodiversity. Now, climate change has become a major threat. And as Madam Manju Sharma ji, Dr. Yushu Srivastava, Dr. Madhulika Agrawal, they have already given a detailed account that how climate change is affecting the biodiversity. And of course, human-induced climate change, as is prevalent now, is unprecedented in the last 2000 years and is intensifying in every region across the globe. So when we talk of the Himalayan region, it is a storehouse of a large number of rare and threatened plants, and about 280 medicinal plants are being used by the pharmaceutical companies, and out of which about 175 are from Himalayan region. So if we see the amount of harvesting of the medicine plant being done in India and in world, in India, 20% of medicinal plants are being cultivated and 80% is coming from the wild habitats. And as far as world is concerned, about 70% is harvested from the wild. Now I will take one example like Indian genus Aconitum, which is represented by 26 species, and 8 species are confined to Western Himalayan region and 15 to Eastern Himalayan region, and 5 taxa are found in both the flanks of the Himalayas. So this is the Aconitum ferox and Aconitum heterophyllum. Then other medicinally important plants like Valeriana, Jatamansi, or Barbaris aristata, these are also being over-harvested from the natural habitats. Even Podophyllum hexantrum, which is very important, medicinally important plant, is also being harvested on large scale. Now, genus Inula racemosa, which is cultivated in some areas but found in wild in the Kashmir Himalayan region and Uttarakhand and Himachal Pradesh, it is also Medicinal Plant Board and others are trying to cultivate on large scale, and this plant is also not common in the natural areas. Another important aspect I would like to tell about the Sasoria ovulata or Brahmakamal and also the Kut. These are mostly found in the Uttarakhand region and also in the eastern and western Himalayan region, but Brahmakamal is being harvested on large scale because the whole inflorescence is used for worshipping the Lord Shiva in Uttarakhand region. So there are about 419 species in the world, and we have done work on this Sasoria, Kasana, and me. We have described 54 species in India. Now, another important genus is Panax or ginseng, and DBT gave us a project to find out, to do the molecular systematics of the genus Panax, and we found that there are a number of species. Earlier only Panax ginseng was reported, but later on Panax bipinnatifidus, soap pansies, ginseng, others were reported from India. So you can see here that the Panax asemicus, bipinnatifidus, pseudo-ginseng, soap pansies, and arunachalensis, these are the species described from India. But the conservation is very important because people are collecting the rhizome of Panax from the areas where it is growing, and ultimately the number of the population is dwindling in the natural habitats. Now, whenever you go to the forested areas, you may find a new species, and this is normally in crotal area the color is yellow, but here you can find the violet colored crotalaria, which we described from Meghalaya, and the name crotalaria meghalayensis was given.
So Department of Biotechnology sponsored All India Coordinated Project was given to us, preventing extinction of species, and Dr. Barik, he was the coordinator, and ultimately we were given also 4 plants to conserve when I was in Delhi University. So the reintroduction is very important. We are collecting the medicinally important plants from the forested areas, but at the same time, we should also think that we should propagate those plants either using traditional methods or using biotechnological means and reintroduce them in the natural habitats. And I will give some examples of the, like 8 plants are used in the as Astvarga in the preparation of Chyawanprash, and out of that we were given responsibility of plants to propagate, like Lilium, Crepidum, Pittosporum, and others. So I will give you the example that how we propagated this plant and reintroduced in the natural habitats. Habenaria is one important orchid which is used in the preparation of Chyawanprash. Lilium polyphyllum, it is endangered, and only a few populations are in Uttarakhand and Jammu and Kashmir, and it is used in the traditional system of medicine. And we propagated through micropropagation means. We introduced this plant in the natural habitat. Then Pittosporum eriocarpum, another threatened medicinal plant, and the bark is aromatic, used in bronchitis and as expectorant. And again, we propagated this plant using the tissue culture method. And I will give you an example that in December 2017, the plants were reintroduced in Jageshwar area of Uttarakhand. And you will be happy to see that in last year when the area was visited where the plants were reintroduced, you can see the whole, it has become the whole tree. So I think wherever we are reintroducing the plant in the natural habitat, it is very important that monitoring should also be done. Otherwise, if you just introduce the plant and leave it as such, it may or may not survive. Another important orchid, Crepidum acuminatum, is a threatened medicinal plant. And again, we propagated this plant, this orchid, and again in 2007, it was reintroduced in Jageshwar area. And last year in July 2021, when the area was visited, you can see that plant which we reintroduced is growing well. So the idea is that conventional as well as emerging technologies should be combined to have more effective conservation of rare, threatened, and endangered plant. And it is very, very important that the depleting Himalayan resources in the backdrop of changing climate and anthropogenic activities should be taken care. When we completed this project, All India Coordinated Project, the conclusion was published in Current Science in 2018. And as you can see here, I'm also one of the authors, where the plant taxonomy, herbarium, and field germplasm bank, they are important for conservation of threatened plants. And another paper by Dr. Barik and others were published in the same issue, classifying threatened species of India using IUCN category. Another important aspect is wild relatives of cultivated plants, and we should know and collect more and more wild relatives of cultivated plants from the wild habitats. And we published a checklist of the Indian cucurbitaceae, where we accepted 94 species, 10 of them are endemic to India. And I will cite one example of trichoganthes. Normally we eat parval. So there are 22 species of trichoganthes in India. 2 are cultivated. One is Trichoganthes dioica, and other is Trichoganthes cucumerina variety anguina. And this is the Lepiniana, Trichoganthes lepiniana. So these plants, they need conservation. Another important plant which has only one genus, one species, Indophaelia khasiana, it is monotypic, found in the Arunachal Pradesh and in Northeast region, and it needs conservation because
only a few populations are left in natural habitats. So conservation of biodiversity is very, very important. It is fundamental at achieving the long-term goal of sustainable development. And the responsibility of taxonomists is more. It is whenever they are going in the field, collecting the plants, making the herbarium specimens, but at the same time, they should also collect propagules, seeds, and fruits. And when they come back to their department, they should try to grow them in their botanic gardens. So coming to the end of the lecture, what are future strategies? Besides floristic studies, new comparative data such as DNA sequences, DNA barcoding are to be incorporated on the studies of Himalayan flora. And also there is a need for establishing biodiversity cyber bank to maintain repository of different type of data. A lot of data is being generated throughout the world. So there should be a cyber bank where all the data is accumulated and ultimately that can be used for the long-term sustainability of the vast and growing amount of systematic data. So what is the way forward? Commercial extraction and transit of medicinal herbs and other economic plants from the Himalayan ecosystem are to be streamlined. That is very, very important. And in situ conservation can be brought about by creating public awareness, establishing gene sanctuaries, more national parks, more biosphere reserves in species rich areas of the Himalaya. So how it is possible? Besides scientists who are working in the area, universities and colleges can play a very, very important role because we have students. All students are sitting here. And even if they plant, as we said that every student should plant a tree somewhere, either in the college campus, school campus, in their surroundings, I think. So they can, that is one idea how the students are important, and also they can develop biodiversity registers in their villages. How many plants are there, how many trees are there, how many animals are there. They can have a biodiversity register. And also there is an urgent need to carry out intensive field surveys to document the undiscovered plant diversity. There is still large amount of data, a large number of plants and the microbes and algae, fungi, they are yet to be discovered. So we have to understand the biodiversity. It is essential for a better and more realistic appreciation of our planet and improved use of available natural resources and a better satisfaction during our own life's experience. So it is very, very important. आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं आज, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वे प्लांट्स जो विलुप्त हो रहे हैं उनको हम किस तरह से बचा सकें। अंत में मैं श्रद्धेय माननीय डॉक्टर मंजू शर्मा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने मुझे इस बायोडाइवर्सिटी अवार्ड के लिए चुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और काउंसिल के सारे मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ये इसको शेयरिंग सर। धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने हमारा द अवार्ड लेक्चर इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर सर की यह लेक्चर आप लोगों को बहुत सारे मैसेज देकर जाएगा, की नोट एड्रेस देकर जाएगा, जिसको आप लोग आगे इस विषय में सोच सकें। एकेडमी हमने पहले भी बताया कि यह अवार्ड 2007 से करती आई है
और इस अवार्ड के साथ एक प्रशस्ति पत्र, साइटेशन, मेडल और साथ ही साथ कैश अवार्ड दिया जाता है। साइटेशन के लिए मैं अपने ट्रेजरर आदरणीय प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और उनको साइटेशन पढ़ करके हम उनको सम्मानित करें। आदरणीय प्रोफेसर यूसी सर। Thank you, Santosh. Thank you very much. Award lecture in the field of biodiversity 2021 has been conferred to Professor Arun Kumar Pandey, Vice Chancellor, Mansarovar Global University, Bhopal, for his outstanding research contributions in the area of taxonomy, molecular systematics, and biodiversity. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी थीमेटिक एड्रेस के कड़ी में हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी हैं। जैसा कि सर ने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर हैज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डॉक्टरेट ही हैज स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी of Tennessee from the USA. And then he has joined in the Institute of Science and Education, ISER, Kolkata. Later on, he has joined as a research associate, Harvard Medical College, Boston, USA. And then National Institute of Plant Genome. And presently, he is as a group leader in the ICGB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi. Sir has the vast experience in the field of especially in the transcription regulation of the gene expression in plants, and he has a vast experience as well as in these research areas for the plant genome, as well as especially in the albedo process and the rice used for the model systems in our studies. May I request to Dr. Jiten Thakur sir to kindly deliver his talk. So, thank you, sir. Thank you for such a nice introduction. Before I start, I would like to dedicate this lecture to my beloved sir and teacher, Professor Jitendra Purana. So I was lucky that I got opportunity to work in his lab and I learned plant molecular biology. तो मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत आज आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स को, वो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ये मैंने पुराना सर के लैब में सीखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, और आज जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ। तो ये लेक्चर जो है सर को समर्पित है। शुरू करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक respected Manju Sharma ma'am for giving me this opportunity that I am here. And I would also like to thank all the members of the council who are present there for giving me this opportunity. And thanks to Nasi for all this arrangement, especially Neeraj sir and Dr. Shukla. So, आप सभी ने तो मैरी क्यूरी के बारे में सुना है ना? She was the first lady to get Nobel Prize. She was the first lady to get Nobel Prize in 2 different subjects. First she got in physics and then in chemistry. So I have quoted her here, and she says that I am among those who think that science has great beauty. And I think good. और मुझे लगता है कि जो साइंस की ब्यूटी है वो उसके डाटा में है। हम जो लैब में रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो हमें डाटा मिलता है उसको हम अपने हाइपोथेसिस में, अपने थ्योरी में फिट करते हैं, तो आपको एक कड़ी मिलती है, आपको अपने सवालों का उत्तर मिलता है। वो बहुत ही मतलब हमें अच्छा फील कराता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं कुछ डाटा आपको दिखाऊंगा
जिसमें ये पता चलेगा कि प्लांट जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं, जो भी क्लाइमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इसे खराब कर रहे हैं, तो वो इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को वो कैसे लेते हैं। तो जो टॉपिक है थोड़ा ज्यादा हेवी है, राइट, आपके लिए लग रहा होगा। तो नाम जो है, टाइटल है मीडिएटर, रोल ऑफ मीडिएटर इन थर्मोमॉर्फोजेनिक एडाप्टेशन प्लांट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे सिंप्लीफाई करने की और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो बाहर स्ट्रेस में सर्वाइव करते हैं। प्रोफेसर मधुलिका ने अपने लेक्चर में कहा था कि प्लांट्स जो है वो भी ये सारा स्ट्रेस झेलते हैं, जो भी हम क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर को, उसका असर सिर्फ हम पे नहीं होता, हम महसूस करते हैं क्योंकि हम आपस में बात कर सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही नुकसान हो रहा है। ये पौधों को भी और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो I'll try to explain that how actually those things are happening in the cells, in the plant cells. और एज ए ह्यूमन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्लांट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। उनके पास भी समझ है, they are very very smart. And why I'm saying that, because you will see that if you observe any plant very carefully, you will realize that they are responding to different type of stresses. उनको मालूम होता है कि कहाँ से रोशनी आ रही है, सूरज किस तरफ है। कुछ पौधों को आपने देखा होगा वो सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, सूरजमुखी सबसे अच्छा उदाहरण है, पर इस तरह के कई पौधे हैं वो एक टाइम पे जाके खिलते हैं, उनका पौधा फूल निकलता है और उनका मुख जो है, फेस जो है वो उस तरफ चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि उनको समझ में आ रहा है कि रोशनी कहाँ से आती है, राइट। दूसरा, उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके लिए उनका जो खाने का चीज है, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे है। तो अगर आप कुछ देखेंगे कि अपने एक पौधा ग्रो किया हुआ है, उसका रूट जो है किसी किसी डायरेक्शन में जाता है, वो इसलिए जाता है कि उन्हें उस तरफ उनका nutrients उनको मिल जाता है. So, and they know that what type of nutrients are there. Like our tongue knows that whether we are eating rice, whether we are eating say wheat or what else. So we understand that. That's how. That's in the same way. Plants also know that where their food is and what type of food is there. So I'll give you an example. That if the soil जहाँ से उनको nutrients मिलता है, अगर उसमें phosphate कम है, तो उसका रूट जो है वो वर्टिकली डीप जाएगा, अंदर जाएगा, फॉस्फेट को ढूंढते हैं. अगर सॉइल में नाइट्रोजन कम है तो वो आप देखेंगे कि वो वर्टिकली मूव करेगा उसका. तो उन्हें भी पता चलता है कि किस तरह का न्यूट्रिएंट वहां पे प्रेजेंट है या किस तरह का न्यूट्रिएंट वहां पे एब्सेंट है. उनको ये भी मालूम चलता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है. अगर ज्यादा ठंड में है पौधे तो एक अलग तरह के मॉलिक्यूल्स उनके अंदर जनरेट होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट मशीनरी टू अडॉप्ट टू द cold temperature, and they have totally different machinery to adopt to the heat temperature. So this is what I'll be talking today. कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट कैसे अडॉप्ट करते हैं. उनको ये भी पता चलता है कि हवा में या पानी में कितना ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है, और अकॉर्डिंगली आपको उनका ग्रोथ दिखाई देगा. अगर कम होगा, सूखा होगा तो वो विल्ट कर जाएंगे. उतना ही नहीं, उनको ये भी पता चलता है कि अब फ्लड आ गया है, बहुत ज्यादा पानी होगा तो कुछ पौधे जो है या तो मर जाते हैं, कुछ पौधे जो सक्षम होते हैं तो हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस्ड इन दैट दे ग्रो टॉल एंड दे कम आउट ऑफ द वाटर सर्फेस. तो उन्हें ये भी मालूम चलता है कि कितना पानी है मिट्टी में भी और हवा में. एंड दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू आवर टच. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टच मी नॉट प्लांट, राइट. स्विमिंग प्लांट के बारे में सुना है. अगर आप उसको छुओगे तो सारे फर्स्ट बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, हम टच करते हैं और वो सारे प्लांट्स. तो उनको प्लांट्स में भी सिस्टम है कि उन्हें पता चल जाता है कि हम उसे टच कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अगर आप उन्हें डैमेज करते हो वो भी उनको पता चलता है, उसका भी रिस्पॉन्स होता है. एक सबसे बड़ी बात है, उन्हें भी उनके अंदर भी याददाश्त है. उनको भी पता होता है कि मुझे इस तरह से या तो परेशान किया गया है या मुझे इस तरह से हेल्प किया गया है. और वो जो मेमोरी है, उनके मॉलिक्यूलर
मशीनरी पे प्रिंट होता है एंड दे कैन यूज दैट फॉर। तो एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। ये जो टच मी नॉट प्लांट है, इसको एक पॉट में ग्रो किया गया और एक ऊंचाई से उसे नीचे गिराया जाता, ठीक है। तो वो जब जमीन पे आता था, एक स्पीड से टच करता था, तो पॉट में जो प्लांट थे वो उसके सारे लीव्स बंद हो जाते हैं। ये काम लगातार कई दिनों तक किया गया, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है इसका, कई दिनों तक किया गया। और कुछ दिनों बाद उस प्लांट में, उसी एक्सपेरिमेंट पे जब उसे नीचे गिराते थे, वो पत्ता बंद होना बंद हो गया। क्यों लगता है आपको ऐसा, क्यों हो गया होगा? वो यूज टू होता है उनके याददाश्त में आगे, ये तो रोज होता है, so it's nothing new, so it was not responding to it. So they also have a memory. Now we have the molecular tools, we have the experimental designs to understand that how they memorize it. उसके लिए मैं नहीं जाएंगे आज, लेकिन ये सारी चीजें जो हम करते हैं, जो as a human being we all feel and we all do, more or less everything is there in plant also. Only thing is that they can't move. So that's why they have to face the stress or optimum conditions in the nature. तो real nature में, ideal nature में तो वही रहते हैं। हम तो जहाँ मुक्ति करते हैं वहाँ से मूव करके अपने घर में चले जाते हैं, right? So they are the one who are facing everything, and who are the culprits? Of course, we are the culprits. अभी आप लोगों ने बहुत सारा सुना, कहते हैं हम क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं, पर हमारे सारे कामों में जो इस लेक्चर के लिए रेलिवेंट है, या फिर सबसे ज्यादा जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। ऑफकोर्स उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दे आर वेरी मच लाइक सिनोनिमस, दे गो टुगेदर। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण तो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे जो हैं, ये बाहर एक कोट बना देते हैं। तो सूरज की रोशनी जब आती है और उसको हिट करती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ तो स्पेस में चले जाते हैं, पर कुछ जो है इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर बढ़ने का डायरेक्ट कोरिलेशन जो है वो यही एमिशन ऑफ ग्रीन गैसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन बाकी के साथ भी इसका कोरिलेशन ऐसा ही है। ये जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, इस तरह के गैसेस, इस तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज होने शुरू हुए, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। और यहाँ पे इनके सारे आई थिंक मैप और उसकी वजह से है, यहाँ से पिक्चर गायब हो गया। यहाँ मैंने ये दिखाया था कि एक बहुत तेजी से पिछले तकरीबन 200 सालों में बहुत तेजी से टेम्परेचर जो है ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड बढ़ता चला रहा है, और पिछले लास्ट 50-60 ईयर्स में तो बहुत तेज बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, इस सेंचुरी के एंड तक अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में, तब तो हमारे लिए ठीक है, हम जैसे सर्वाइव कर रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे और कोशिश करते हैं कि वहीं तक उसको रोकें। तो कई कंट्रीज ने, इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम अपना नेट एमिशन 0 रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हालात ये है कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही रहा, मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ, तो ये सेंचुरी के एंड में ये ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया, और वो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो। जब अभी तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है 1850 के कंपैरिजन में, एंड वी आर सीइंग सो मेनी कैटास्ट्रॉफी गोइंग ऑन ऑल अराउंड, देन यू कैन इमेजिन कि 4 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होगा तो क्या होगा, राइट। कई चीजें तो आदरणीय वक्ताओं ने पहले बताया हुआ है, जैसे मनीषा मैम ने बताया एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, सारे कोरल्स टूट जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के कोरल रीफ में हो रहा है, हमारे अंडमान के पास जो है कोरल्स, उनको नुकसान हो रहा है। सर ने इतने सारे एग्जांपल्स बताए पौधों का, तो ये सारी चीजें तो होंगी। इन सारी चीजों, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इनका असर पौधों पे किस तरह से हो रहा है और क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो यहाँ पे लिस्ट है। आई एम सॉरी इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट सो ओवरऑल इसमें दिखाया गया कि उनका ग्रोथ कम हो जाता है, ईल्ड कम हो जाती है, और याद है कि पौधे जो हैं या पेड़ पौधे
ये हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे हैं. They are the primary producers, right? So if they are affected, we are bound to be affected. Only thing that when we discuss about ourselves, we don't talk about them. But the fact is that if we are getting rid of, if we are uprooting all these trees and plants, then ultimately we are going to suffer. हमें ही नुकसान होगा. तो प्लांट को नुकसान है, उसका एड कम हो जाता है, उसकी हेल्थ कमजोर हो जाती है, उसका पत्ते गिरने लगते हैं. तो इन सब चीजों से बचने के लिए प्लांट के पास भी तरीका है, वो भी कोशिश करता है सरवाइव करने का. और वो कैसे करता है, उसका नाम है थर्मोमॉर्फोजेनेसिस. तो जब सॉइल सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पौधा क्या करेगा, कोशिश करेगा सरफेस से दूर जाने के लिए, पर वो उसके पास तो पैर ही चल तो सकता नहीं है. तो वो क्या करता है, अपने स्टेम्स को लंबा कर देता है. ठीक है. तो इस मॉडल प्लांट में एरोटॉक्सिस है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा पौधा है इस वजह से, क्योंकि इसे हम पेट्री प्लेट में ग्रो कर सकते हैं, इसे हम पॉट में ग्रो कर सकते हैं, इसे हम ट्यूब में ग्रो कर सकते हैं. इसका लाइफ साइकिल छोटा है, तो हमें जो भी असर देखना है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमको जल्दी दिख जाएगा. इसका जेनेटिक मैनिपुलेशन आसान है क्योंकि ऑप्टिमाइज हो चुका है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके अब उस चीज को स्टैंडर्डाइज कर रखा है. तो इसको हम अपने लैब में यूज करते हैं. ये देखिए, ये 22 डिग्री पे पौधा ग्रो किया गया है लैब में, और ये 28 डिग्री पे किया गया. तो इसका ये जो हाइपोपर्टिल है ये लंबा हो, राइट. उसका पर्पज ही है कि वो गर्म सरफेस से ऊपर बर्फ दूर चला. दूसरा, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो किया गया. इसमें आपको दिख रहा है पत्ते सारे घने हैं, एक साथ चौड़े हैं और एक साथ. पर इसमें जो हाई टेम्परेचर पे है ये पत्ते लंबे हैं. ये जो पेटियोल है ये लंबा हो गया, लीव्स जो है पतले हो गए और शेप चेंज हो गया. पर्पज यही है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर नीचे से आ रहा है तो यहाँ ट्रैप हो जाएगा और ये इनको ज्यादा गर्मी लगेगी. यहाँ पे टेम्परेचर ट्रैप नहीं होगा, हीट वेव्स जो है वो मुक्त कर देंगे, है ना, खुला जगह तो ज्यादा वेव जो बाहर निकल जाएगा. तो इसको इसलिए ये इस तरह से ग्रो होने लगता है. ये यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाया गया है, जहाँ पे ये रियल लेबोरेटरी में ग्रो किए गए पौधे, ये रियल पिक्चर है. तो इस तरह का जो ग्रोथ होता है इसको हम जो गर्म में वो कॉन टेम्परेचर में जिस तरह का ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोमॉर्फोजेनेसिस. जो लाइट से रेगुलेटेड ग्रोथ होंगे उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जो टेम्परेचर होंगे वो थर्मोमॉर्फोजेनेसिस. ठीक है. कहीं कुछ अटकेगा तो वो हाथ उठा के बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. तो अब थोड़ा मॉलिक्यूल पे जाते हैं. आप लोगों ने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पढ़ा है जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं. 10th वालों को डीएनए और आरएनए पता है. तो ये अब इसमें जो है ये प्रोटीन्स हैं जिसे हम फाइटोक्रोम बोलते हैं. उनका नाम है फाइटोक्रोम. ठीक है. फाइटो लाइट के लिए, क्रोम कलर के लिए, और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. तो हमारा जो सूरज का किरण है 7 लाइट से है, उसमें जो रेड लाइट है एंड में उसके उस स्पेक्ट्रम को और एक्सपैंड करेंगे तो उसमें रेड लाइट है और फार रेड लाइट है. तो कुछ प्रोटीन्स हैं वो उसको सेंस करते हैं. ठीक है. उसके फोटोन से वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है और फिर उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. ये तो सही है ना, फोटोन ने किसी मॉलिक्यूल को हिट करेगा तो उसको चेंज करेगा. तो इस तरह से ये इसमें फार में एक्साइट होने वाला जो उनका फॉर्म है दैट इज एक्टिव फॉर्म, और जो रेड में फॉर्म है वो है इनएक्टिव फॉर्म. भूल जाते हैं, ये देखते हैं कि फाइटोक्रोम है, इसका एक्टिव फॉर्म है, इसका इनएक्टिव फॉर्म है. इन दोनों के बीच की शटलिंग जो है वो टेम्परेचर से भी होती है. जब ये डिस्कवर हुआ था ये लाइट से दिखाया गया था, पर इनका जो शिफ्टिंग है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो टेम्परेचर से भी रेगुलेट है. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर को तो दिस वन ऑप्शन. और ये क्या बताइए, जो एक्टिव फॉर्म है एक दूसरा प्रोटीन है PIP4, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर. ये इसको इसके एक्टिविटी को रोकता है. तो सूरज की लाइट पड़ी एक प्रोटीन पे, वो प्रोटीन एक्टिव हुआ, उसने दूसरे प्रोटीन के काम को फंक्शन को रोक दिया.
तो ये इसको सप्रेस करता है। ये क्या है, ये मास्टर रेगुलेटर है ऑक्सिन का। ऑक्सिन के बारे में सुना है? जैसे एनिमल्स में हम लोगों का अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम है। हम कई ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, ये सारा सुना है। ऐसे प्लांट्स में भी कई हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन है ऑक्सिन, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, ये सेल के डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है और सेल के इलांगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने बताया था कि इसके इलांगेट हो जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से इलांगेशन होगा। तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो चीज जो है उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और वो उनको रेगुलेट करता है एक प्रोटीन, उसका नाम है PIP4, साइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। तो जब वार्म टेम्परेचर पे 5B जो है वो इनएक्टिव हो गया और ये क्योंकि इसको सप्रेस करता है इसलिए ये ज्यादा बन जाएगा और इसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा। ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा तो सेल्स इलांगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, इसलिए वो लंबा होता है। ठीक है, तो ये आपको पर हम लोग ये जब काम कर रहे थे तो हमने देखा हमारे लैब में एक पौधा है जिसमें कि ये होता ही नहीं। हम उसे वार्म टेम्परेचर में रखते हैं तो उसका स्टेम जो है वो इलांगेट नहीं होता है, और वो ये है। ये देखिए, ये वाइट टाइप है। इसको जब ये 22 डिग्री पे ग्रो किया गया है और इसको जब हमने 29 पे ग्रो किया तो ये इतने लंबे हो गए। पर एक पौधा है हमारे लैब में जिसका नाम है मेड 70, उसको जब ग्रो करते हैं वो इतना लंबा नहीं है, राइट? छोटा ही रहेगा, थोड़ा सा लंबा होता है पर इतना नहीं होता जितना नेचुरली उसको होना चाहिए। तो इसका नाम मेड 17 है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है मीडिएटर, जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। ये उसको कोड करता है, उसके एक सबयूनिट को कोड करता है, मीडिएटर। ठीक है, मीडिएटर जो है इसका रोल है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें से कई फिगर्स गायब हो गए। एनीवे, तो ये मीडिएटर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल करता है। और मैंने आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, एग्जैक्टली नहीं बनता है। आरएनए सिंथेसाइज्ड यूजिंग डीएनए, इंफॉर्मेशन कोडेड इन डीएनए एज द टेम्पलेट। तो वहां से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं। ये कई प्रोटीन एक साथ आके काम करते हैं, कई प्रोटीन जो है अकेले भी काम कर सकते हैं। ठीक है, एक डीएनए कई सारे प्रोटीन बना सकता है और एक डीएनए से हो सकता है सिर्फ एक ही तरह का प्रोटीन बने। एक डीएनए में एक जीन से कई आरएनए बनते हैं और कई प्रोटीन बन सकते हैं। या हो सकता है कि एक जीन से सिर्फ एक ही प्रोटीन और एक ही आरएनए प्रोटीन बनता हो। इस केस में ढेर सारे प्रोटीन जो है मीडिएटर, जिनका नाम दिया गया है, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो अलग अलग सब यूनिट के अलग अलग फंक्शन लिखे हैं। इसमें कहीं भी टेम्परेचर नहीं है। तो जब हमें वो रिजल्ट दिखाई दिया था कि मेड 17 में वार्म टेम्परेचर में कोई हाइपोथेटिकल इलांगेशन नहीं हो रहा है, तो हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि अभी तक मीडिएटर का रोल वार्म टेम्परेचर रिस्पॉन्स में इतना ज्यादा डिफाइंड नहीं है। वो इतने सारे फंक्शन यहाँ लिस्टेड हैं, उनमें से वो नहीं था। तो ये करता कैसे है? तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस में इसका रोल होता है। तो आपने जो अभी आप इमेजिन करिए कि छोटा सा सेल है, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए है। अगर आप एक एडल्ट आदमी को क्रश करके उसका सारा डीएनए निकाल दिया जाए और फिर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो इट कैन गो टू द सन एंड कम बैक। इट इज सो बिग। इतना बड़ा डीएनए इस बॉडी में फिट है, मतलब एक सेल के अंदर तकरीबन 2 मीटर डीएनए जो है रैप है। तो किस तरह से उसको पैक किया गया होगा, राइट? तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर जीन से एक जीन, पूरे क्रोमोसोम में एक छोटा सा जीन है, वहां से एक आरएनए बनाना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, तो आपको उस पैकेजिंग को खोलना पड़ेगा। फिर से उसी हिस्से को अनट्विस्ट करना पड़ेगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से आरएनए बनाना पड़ेगा। कितनी एनर्जी उस पर लगेगी। ये सारा काम करने के लिए ढेर सारे प्रोटीन एक साथ आते हैं और तभी ये हो पाता है। तो वो जो प्रोटीन ढेर सारे आते हैं उनमें से एक सेट ऑफ प्रोटीन जो है वो है मीडिएटर। कुछ क्लियर हो रहा है, राइट? तो ये मीडिएटर जो है ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब कहां से
ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, कब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ये सब डिसाइड करने के लिए भी सेल्स के पास एक सेट ऑफ प्रोटीन्स है जिनका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जाके डीएनए को कहीं कहीं पे बाइंड करते हैं, डिपेंडिंग कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स हैं, ये जाके डीएनए में स्कैन करके वहां पे बाइंड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो ये मैसेज जो है ट्रांसक्रिप्शन मैसेज तक जाने के लिए मीडिएटर का हेल्प लिया जाता है। मीडिएटर इनसे भी इंटरेक्ट करता है, इनसे भी इंटरेक्ट करता है। तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये एक ब्रिज बनाता है इन दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए। इसका मैसेज ही यहाँ तक आसानी से पहुंचा सकता है क्योंकि इन सबके साथ ये इंटरेक्ट करता है। तो हमारे लैब में बहुत सारा काम हो रहा है इसके टोटल स्ट्रक्चर समझने के लिए, इसका फंक्शन समझने के लिए। तो वो सारा यहाँ पे तो मैं नहीं बताऊंगा। ये जो हमने एराटॉप्सिस का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का, तो जैसे मैंने बताया तो कई सारे सब यूनिट्स हैं, कई सारे प्रोटीन्स हैं। तो दो सब यूनिट्स जो है MET17 और MET14, हमें लगा कि इनका बहुत ज्यादा रोल है, ये पूरे स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा MET14 एक एंड से एक होने से शुरू होकर दूसरे एंड तक जाता है, राइट। तो इसका मतलब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर functioning like a scaffold over which all the different subunits can fit in between. So if you delete this, then the whole structure will fall apart. टूट जाएगा तो फिर काम नहीं होता है। तो हमें अब जब भी फंक्शन स्टडी करना होता है तो हम इन्हीं दोनों पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये समझ के कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स को एक साथ फोल्ड करके रखता है। तो अब बस मैं स्टेप बाय स्टेप बता के ये तो ये जैसे अभी मैंने बताया आपको कि फाइटोक्रोम जो है इसका एक्टिव फॉर्म PIP4 के काम को रोकता है। PIP4 जरूरी है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो जब ये ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ज्यादा बनेगा, तो सेल्स इलॉन्गेट होंगे। ये वार्म टेम्परेचर में होता है। तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया फोटो, ये बता रहा है कि वार्म टेम्परेचर पे वाइल्ड टाइप में PIP4 बढ़ गया, इसलिए ऑब्जेक्ट बढ़ गया, इसलिए स्टेम इलॉन्गेशन हो गया। लेकिन हमारे MET17 में जब हमने इसको एक एक करके स्टडी किया तो पता चला कि ज्यादा चेंज इसमें नहीं आया। जैसे वाइल्ड टाइप में ये ज्यादा बढ़ गया, इसमें नहीं बढ़ा, और इसीलिए ये स्टेम इलॉन्गेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इसके बाद हमने एक एक करके इन सारे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये कौन सी MET17 जो है इन सारे एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। तो ये इनको रेगुलेट कर रहा है। अब ये इनको रेगुलेट कैसे कर रहा है, तो इसके ऊपर एक दूसरा प्रोटीन आता है MIG2, वो वार्म टेम्परेचर में इनको MIG2 के थ्रू MET17 रेगुलेट होता है और MET17 फिर इनको रेगुलेट करता है। इसके बाद प्लांट में जो है ये अभी तक जो सारी बातें हो रही थी ऑक्सीजन के थ्रू हो रही थी। तो प्लांट में ढेर सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन के अलावा एक और हार्मोन है, उसका नाम है जैस्मिनिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक ये नहीं पता था कि ये भी थर्मोवास्कुलर में रोल प्ले करता है, पर हमारे इस पेपर से लगता है कि इसका भी रोल है। कैसे है वो अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। तो ये ज्यादा काम जो है ये इन दोनों स्टूडेंट ने किया है, रेखा ने और मनोज शर्मा ने, और इसमें हम लोगों ने कोलैबोरेट किया था दूसरे लैब के साथ, डॉक्टर ऐश्वर्या लक्ष्मी के लैबोरेटरी के साथ। तो कुछ भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, कुछ पूछना हो तो बता देना। है ना। तो ज्यादातर जो लैब में काम हो रहे हैं वो मीडिएटर के ही हो रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं अपने लैब का सब यूनिट बोलता हूँ। अगर ये खुश रहते हैं तो लैब खुश रहता है। और जो फंडिंग है वो ऑफकोर्स DBT DST इन सबों से आता है। इससे पहले कि मैं खत्म करूँ, ये साइंस एंड एवरीडे लाइफ कैन नॉट एंड शुड नॉट बी सेपरेटेड। ये मैंने यहाँ इसलिए रहता है कि हम सारे क्लाइमेट चेंज के से जो परेशानी हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। उसको रोकने के लिए अलग अलग मेथड्स और बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So what I am trying to say here is that आप जब भी आप कुछ कर रहे हो तो एक बार साइंटिफिकली सोचो कि क्या वो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। अगर पहुंचा रहा है तो मत करो। तो इसीलिए ये वाला कोट किया कि एवरी डे we cannot separate science from our life. तो आप सोचिए समझ के कदम उठाइए, and only then you can figure out
our day. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आज के इस जो हमारा बायोडाइवर्सिटी और स्पेशली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जो आप लोगों को अगर स्पेशली मॉलिक्यूलर लेवल पर प्लांट के बारे में रिसर्च करना हो, ज़्यादा जानकारी बढ़ानी हो, तो सर यहाँ पर उपलब्ध है। हम आपको थोड़ी देर बाद फिर से लेक्चर सर यहाँ पर रहेंगे, आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा। लेकिन चूंकि हम लोग इस समय बहुत प्रोग्राम के शेड्यूल में काफ़ी लेट हो रहे हैं, लेकिन अगले स्पीकर को बुलाने से पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर यूसी श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर सर को एकेडमिक की ओर से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड हम देना चाहेंगे। और सर ये एक तो काइंडली प्रेजेंट द मोमेंट टू एज ए टोकन ऑफ रिवार्ड। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम का जो अगला लेक्चर है वह मुख्य अतिथि के उद्बोधन के रूप में है, जिसको हम प्रोफेसर आर एन टंडन मेमोरियल अवार्ड लेक्चर के रूप में भी कंसीडर करेंगे। और यह लेक्चर दिया जाएगा प्रोफेसर सरोज पारिक सर के द्वारा डिलीवर्ड होगा। हमें पहले ऐसा एक्सपेक्ट था कि सर विल कम हियर और यहाँ पर फिजिकली आप लोगों के बीच में इस लेक्चर को डिलीवर करेंगे, लेकिन आज सुबह शायद पता चला कि ड्यू टू सम अदर एंगेजमेंट्स वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन सर उपलब्ध हैं। प्रोफेसर एस के पारिक सर इज प्रेजेंटली डायरेक्टर ऑफ Central Director of the NBRI, National Botanical Research Institute, Lucknow, or before here, he was the head Department of Botany, Center for Advanced Studies in Botany, New Shillong. Professor Parik sir is well known for his research in the forest of ecology and his works on impact of anthropogenesis, disturbance of plant species, diversity and ecosystem is well known. Presently, Professor Parik sir is also the Vice President of our Academy. Before delivering his lecture, I want to share that this lecture, Professor R. N. Tandon Memorial Lecture, was instituted by the Academy in 2020, and every alternate year, this award is being given. This was instituted in 2000, and the first awardee was Professor Anupam Verma sir from New Delhi, and later on Professor H. N. Verma, who was at that very time he was in Botany, Department of Botany, University of Lucknow, and presently he is Vice Chancellor, Jaipur National University. The great botanist Professor S. Y. Mohan Ram sir was also the awardee of this R. N. Tandon Memorial Award, as well as Professor Pramod Tandon sir. Professor, he was at that very time Vice Chancellor of NEHU, Professor L.C. Rai sir, Professor S.K. Sapuri, and presently the R. N. Tandon Memorial Lecture Award 2020 is given, delivered by Professor S.K. Parik sir. May I request to Professor Parik sir to kindly deliver this talk. Sir, over to you, sir. Thank you, Dr. Santosh. Am I visible and my slides are visible? Yes, sir, very well, sir. Thank you for inviting me and respected Manju Sharma madam and all the dignitaries, office bearers of our academy, and of course children. I thought that is the World Environment Day, and already a lot of things have been spoken. I will just also speak on that line, but little bit I can show you that how science can really help us to address these challenges which we are always talking. You see, it is such a mega challenge that 1 or 2 or 100 people, if they do, they cannot address these mega challenges. Each one of us have to contribute. So as a scientist, what we can do, I have just tried to show how the challenges which you are facing, the work which you do in the laboratory, how it can be taken to the field and addressing those challenges. So I thought that I should give, aligning with this year's, you can say, slogan, only one earth. Already Dr. Manju Sharma and Dr. Madhulika, they have already told extensively on this. So I feel that there are 3 approaches which has been given in this year's World Environment Day objectives. There is a celebrate, protect, and restore the planet. So only one earth. After that, with focus, these 3 things are there. So I thought that let me give this as my title.
And this one, the picture which you are seeing, I have a little bit more slides, but don't worry, I will try to go fast. So this slide is, you can see, this is a high altitude lake. You can see most of the time it is covered with snow, and it is at 4,500 meters in Arunachal Pradesh. So this is the pristine environment. And you can see this is a pristine sacred grove where the forest is undisturbed. And if we don't take care, this will be the situation, the degraded sacred forest. Here, the river is so pristine, but we build the dams, and this is the situation. Again, it is in Arunachal Pradesh and that is Meghalaya. And you see, when it is not only the habitat of the ecosystem, but also you will see beautiful wildlife. You see, this is a black-necked crane. Nowhere in India is found, and they come once in 3 years, 4 years, and they take rest and they go. So these are the things which we must conserve if we want to protect. So this is the sacred forest which gives a lot of ecosystem services, and we cut it down like this. And you can see we destroy like deforestation, shifting cultivation completely. You see these mountains, once upon a time they were covered with thick forest, now nothing is there. Here you see the sand mining is going on, so the complete devastation of the ecosystems. And here you see extreme farm, when you extract coals and the coal mine deposit you do, this is the situation. So this is the situation, the challenge that if we protect, so one side is the scenario, very pristine environment, good for everything, ecosystem, high ecosystem services. If you destroy, it is all disastrous for everybody. And also this, we want to celebrate also. World Environment Day is not only to realize what we have done and what we have not done, because now it is, you can say 1572, almost 50 years we are celebrating this year. So you can see that along with that celebration, what we have achieved in India, not that always every. Sir, Parik sir, you are muted, sir. Your voice, we are not getting your voice. Sir. बारिक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर. यहाँ से उनको फोन करके बोलो. ओके सर. सर, the slide is good, but we. तो नहीं है ना, क्या दिखा रहा है प्रॉब्लम? क्या नहीं म्यूट नहीं, फिर से एक बार ऑफलाइन. Sir, you could try to log out and log back in, sir. व्हाट्सएप की आवाज आ रही है नहीं वहीं से. I think sir, you once log out and then log in again, then it may be rectified, sir. Am I audible now? Yes, sir. I'm audible now. Okay, that was the right thing. So
Is it visible now? Yes, sir. Just make it full screen mode, sir. Okay, yes, fine. So I was not audible right from the beginning last time. Hello. Yes, sir. Last time I was not audible right from the beginning. Yeah, no, sir. From the last slide, sir. Okay, this one I continued. Yeah. Okay. Okay, so these are the disturbances. Yes. And, so not that it is always that we have not done. Always we say that we are in the back gear, whether it is the biodiversity or it is the climate change or any global challenges what we face. But no, we have progressed quite a lot. If you see, this is the list of activities or list of the achievements in the conservation area. So we must celebrate those things. I'm just giving an example. Even the same thing in the energy conservation, reduction in the emission. Okay, zero emission we have not reached, but we have all progressed substantially, and that we must celebrate. And for example, we have 18 biosphere reserves, and more than 5% conservation area is a huge, progress. And this is the recovery program where just Dr. Arun Pandey was telling that how we did in the DBT program. So around 100 species we conserved. So in total, so far we have been able to rehabilitate at least 156 threatened species. And these are the protocols we have analyzed. The most important is the technologies which people develop abroad, not necessarily applicable to India or our situation. So we develop our own protocols. So this is the conservation protocol we tried. So the Madam Madhulika was talking about this triple approach, that climate change, nature and biodiversity loss, and pollution and waste. So if you see, these are the three major force factors for which you can see India or world or earth as a whole, we are in the red zone, because these are creating problem, and even the very existence of life on this earth surface is also in question. So I will just try to touch that how we have worked on these areas, and each and every scientist who is working in this country, in the lab or in the field, we do the work for addressing these problems. So I will just touch upon these three things, how we have done, and directly with my group, we have done in the past 20-30 years. So I'll just show you. So this is the climatic suitable areas for rice. You can see when we model it with the RCM and the global climate models, you can see that the substantial increase in the rice area in future due to the climate change. This is a 2050 prediction. And of course, the RCPs are changing. I'm not saying that it is a dynamic process, but when we worked on this RCP 2.6, 4.5, 6, and 8.5, we found that there is a substantial decrease in the area of wheat. So rice will increase, but wheat will decrease. Maize will be decreasing. So maize and wheat, both of them will decrease, and millet will increase actually. Many climatic suitable areas will be created because of the millet. So rice and millet will be beneficial. So like that, you can see that this plant diversity and ecosystem function, because all this climate change or the land use changes or the anthropogenic activities, they not only alter the structure of an ecosystem, but also ecosystem functions are highly affected, and we have given the quantitative data and evidence for that, whether it is the litter decay or can, all the functional attributes. But also you can see that the extinction of the species increases. Once either it is the disturbance or it is the climate change, we have given in the metapopulation modeling how you will see Paris polyphylla population. Of course, several populations we have done. The example is here that their extinction probability increases because of the disturbance. So if a species has to 80 years, 100 years to survive, but it comes down to, you can see here, 50 years or so. So the disturbance or climate land use changes, disturbance or climate change, they have a direct impact on not only the ecosystems, as I showed you, but also on the species level, populations, communities, everywhere there will be an impact at all levels of the biotic spectrum. So you will see that in the modeling also metapopulation, when we did, the number of individuals to be restored to bring back the population into at least safe zone, we also need more individuals to introduce in the ecosystem. So all these things are affected by the disturbance. And also here you can see, the biodiversity or the functional diversity of an ecosystem or the species interaction with the other species,
that is also affected by the climate change or the disturbances. Here is an example you can see. This is a self-defense mechanism in the plant, extrafloral nectaries. And when you will see that all these things are very fine-tuned, balanced with the insect and plant interaction. And that gives the, you can see extrafloral nectaries, these are the extrafloral nectaries. So they secrete some volatile compounds. Also, of course, they secrete the sucrose. But most important is, and they attract, we say that trophic interaction, but you will see that here pre and post herbivory, that means disturbance is there, but this is well fine-tuned with the system. So they need this interaction with the herbivory, but all these disturbances, they are creating a lot of problem, and this type of fine-tuned, those so dynamically in the equilibrium position they are there. They are dynamic but still equilibrium. This plant-animal interaction, and that gives that defense mechanism to the plants. All these fine-tuning volatile organic compounds, they also get affected due to disturbances. So what I mean to say, it is not in the macro scale which we are observing in our eye, but also many micro-level processes are on, which is also affected by these disturbances or by anthropogenic activities or climate change. So even the ecosystem services, when we quantified, around 8 ecosystem services we did it, and we found that disturbances, they are reducing the areas to be, suppose there is an area which is giving very high ecosystem services, but if the disturbance is there or with the climate change, you will find that ecosystem services, flow of ecosystem services is getting reduced. So it is a multiple approach, multiple impact. So this is the, we did it the ecosystem services zone and how the disturbance is reduced in that. So no doubt that means because of the either human anthropogenic activities, due to faulty land use system, or due to natural problems, or due to climate change, our area under the wasteland, area under the less productive area, land degradation, that is increasing. So this is the map. And you can see the category-wise wasteland, they are enhancing, they are increasing year by year instead of decreasing. So we have to see that how these wastelands to be put into the productive use. So, and you can see this is not only at the level of the structure which you are seeing, you can see here for the endogenetic plants, for example, NOD gene which is responsible for nodule formation, or NIPS gene which is responsible for nitrogen fixation, and HOP gene which is responsible for nitrogen uptake. So they play a major role. So those organisms with these genes, if they are present, then your amelioration is faster. So similarly, enhanced potential of denitrification rate results in nitrous oxide emission. So if you want to really reduce the nitrous oxide emission, so denitrification rate has to be reduced. So the abundance, richness, and diversities of denitrifying microbes with NIDS and NIDK and NOSZ genes, they will decrease by natural revegetation and artificial afforestation. So if you replant it, the area activity is reduced, and if you revegetate it or artificial afforestation you do, so you will find that these gene-bearing organisms, their population will be reduced, and denitrification will automatically be reduced, and there will be release of the nitrous oxide will be less. So pollutant sites, sodic, arsenic, and fluoride affected land. So these are the challenges in endogenetic plants. Similarly, you will see in the northeast and many states of the country, around 11 states of the country which are affected by the septic cultivation. This is an example how we monitor very closely. Although fortunately the area overall it is reducing, that is good thing, but also we have a big challenge to rehabilitate those septic cultivation areas. I will show you how we did that also. So considering all these problems, we are altering the ecosystems because of our need. But yes, that we cannot stop 100%. But yes, we have to really restore them. So for that, I think the UN Decade on Ecosystem Restoration is on, as Professor Madhulika told. So it is an effort to halt and reverse the decline of the natural world, an international activity that initiates or accelerates the recovery of an ecosystem with respect to its health, integrity, and sustainability. Restoration of an ecosystem is an attempt to return to its historical trajectory. Rehabilitation is preparation of ecosystem processes, services, and productivity, but it does not mean to restore the ecosystem to its pre-existing condition. What it means, please remember that if you destroy a particular ecosystem, it's very, very difficult to get back the original ecosystem. It is almost impossible because of the kinetic energy and many other aspects are there. We've seen that we can really near recover it, but we cannot go back to the original position. So ecosystem restoration, I have taken this completely. You can see that why ecosystem restoration is important.
So in UNEP, they have provided the definition, strategies, and importance in this one paragraph. Ecosystem restoration means assisting in the recovery of ecosystems that have been degraded or destroyed. It is not only that to recover, restore to those, but also to conserve the ecosystems that are still intact. So that is more important. If you save them, that means you don't have to spend for restoration. So between now and 2030, the restoration of 350 million hectares of degraded terrestrial and aquatic ecosystems would generate $9 trillion in ecosystem services. Restoration could also remove 13 to 26 gigatons of greenhouse gases from the atmosphere. The economic benefits of such interventions exceed 9 times the cost of investment. So you can save actually 9 times the cost of investment, whereas inaction is at least 3 times more costly than ecosystem restoration. If you don't do anything, so it will be 3 times costlier. So this is in summary why eco-restoration is important. So I think one must know that Bradshaw classification, because it is a replacement. Say for example, we cannot get back to the original ecosystem, so that is called replacement. A new ecosystem we can develop with lesser effort. But we can enhance the ecosystem restoration process, we can rehabilitate, we can restore, but all of them will be much lower than the original ecosystem. So these are the different strategies we follow, and if no action is there, naturally it will go in the negative way. So this is for fundamental basic understanding that how eco-restoration we take care of. So rehabilitation, restoration takes place through the rehabilitation and also many other aspects, approaches depending upon the ecosystem in place which we are going to recover. This is there are passive restoration and active restoration. So we did this one passive restoration. You can see change in vegetation and nitrogen mineralization during recovery of a mountain subtropical broadleaf forest in northeast India. So you can see that how the recovery is taking place. It's a natural process. We are not interfering anything except the protection. So you will see that this is the 10 years. So even the 10 years, you will see the structural changes. They are far lower than that of the undisturbed forest as the reference ecosystem. So even 10 years, you are not reaching even 50%. In this case, it is a 50%, but it is really very tough to reach the structural. And you will see that always in the natural passive restoration, there is a successful takes place. You can see that these boxes, they are telling that in which year of the recovery, what are the species composition, and they are not identical. They always change. And we know that which species, say for example, in this case, Acer oblongum, we have the technique through which you can know which species is holding the key for the faster recovery or the recovery can be taking place, so that we can target that species to replant so that we can hasten the recovery process. So ecosystem function also, that was the structural aspect, the functional aspects also, they recover. The same thing, it takes time. Ecosystem services is the hydrology. You can see that we have done it in the disturbed forest and the undisturbed forest. So those that are there upstream and downstream, how the quality differs. And all these things, finally, what we say, that the different functional groups, they are responsible, and for that, the ecosystem services are directly governed by the environmental factors, including the climate change. And you will see that the cycles, nutrient cycle, they are getting disrupted because of the disturbance. But also, not only that, adjacent crop fields. I just showed you the photograph also. The agricultural field adjacent to an undisturbed forest and adjacent to a disturbed forest, their productivity is totally different. So you can see the data here. So we have done it that yes, if the forest ecosystem is undisturbed, you have bumper yield without adding any chemical fertilizer or any farmyard manure. They don't give anything. For last 30 years, I'm seeing if the biodiversity rich forest is there adjacent to the agro ecosystem, you don't have to put anything. But on the other hand, in the disturbed forest, this is not the case. The yield and the productivity both are drastically down. So that shows that how the carbon sequestration or nutrient cycling or hydrology, many other things, they are dependent upon this, and climate change is really impacting all of these. So how to restore those? So you can see here again, we have studied plant diversity, net primary productivity, and soil nutrient contents of a unit. So you can see that even after 50 years, it remained low in the subtropical grassland. So forest you have seen, even the grassland also you'll see all these primary productivity, soil nutrient dynamics, everything, even after 50 years post-disturbance recovery from coal mining, it remains low.
So these are some of the things. So active restoration, so you know now passive restoration, it is taking more than 50 years. So how do we really manage? We cannot wait for 50 years. So we have to take the active restoration. So here is some example we did in Tripura, and you can see that we took different parts and different approaches we took. And whether it is a soil conservation, it is a 4-tier. You can see here the 3-story model, including a below ground, that is the 4 tiers. So to enhance the income of the farmers, using the scientific knowledge, so where you will find that various scientific inputs are there, and finally you will find that the income we have been able to enlarge when it was getting from the same piece of land 3,000 rupees, and monthly income for maximum 21,000 rupees you was getting. But in the same piece of land with the scientific input, you will find that 1,50,000, the last line you just see. So it is now constant. He doesn't have to shift also. So from you can say 21,000 to 1,50,000. So almost you can see how many times multiplied. Almost it is 8 or 7 times at least, 7 to 8 times increase in their income. And also they are not shifting the land from as they were doing in the shifting cultivator land. But also we continued this type of working for further improvement of the models. So you can see under this NMHS project of the Ministry of Environment and Forest, we developed in all these six states of Northeast India. And you will see that we developed it, all those models we followed, we tried to improve that. But we thought that biofertilizer, we can develop, or biostimulants we can develop from the same shifting cultivation plots. So you'll see that bacteria colonies we identified and we tested for different properties. And finally, you can see that they were chosen, whether it is the phosphorus cellulosing or it is the rhizobia group. And finally, you will see that we developed we tested for indole compounds, ammonia production, cytophore production, HCl production, catalysis activities, and finally we selected the strain and developed the biofertilizers. And we treated also with the seed whether they're working or not. So all these things testing scientifically proven. After that, we found that yes, they are good, and we developed the biofertilizer. You see, so these, and we followed that following the BIA standard. So the science knowledge which we are generating in that lab, we are straight away transferring to the field. And you can see here, so this is the approach we took. This is the, and we have to follow the standards of rhizobium, standards of the azotobacter, standards for the azospirillum. So there are rules are there under the BIS. So following those things so that it can be approved by the regulatory bodies. And finally, we got this biofertilizer developed, and farmers, we trained them. And you see now in the farmers field, it is being directly tried, and the result was extremely encouraging. And not only that 4-tier model which we showed before, which enhanced income around 7.5 times, but after the fertilizer addition, again it went up more than 10 to 12 times income enhancement in the same piece of land. So this is an example just I tried to share with you that if we do the laboratory works, it should not be confined to the laboratory. Immediately it should be transferred to the field, then only our science will be successful. And we can challenge. You can see here now, in the fields, only one example we have given here, phosphorus bacteria addition, you see the increase in enhancement from 72% germination percentage, one parameter we have given, a 9% enhancement here. So like that, I think, the results, and so these are the different varieties of the fruits and vegetables we utilize for all the states, in fact. So the active restoration, another person you can show that there is an environmental challenge of the AMD, coal mining, as you know. In the Assam and Meghalaya in Northeast, it is a huge problem. The Meghalaya and pH becomes 1, even at times just simply point something also. So forget about 5, 6. So it is a big challenge, and it completely pollutes, kills the complete vegetation in the agricultural fields. So we tried, and these are the small scale mining. So they cannot afford big money. So we thought that a low cost technology we have to develop, and we could develop a technology with less than 50,000 rupees. It's still in 49,000 rupees the total cost. So this one we did it, and you can see this is the yellow boy, we commonly said that acid mine drainage with very low pH and very heavy metal load. So the same principle we applied, we isolated the bacteria from those areas, and we tried to develop all this testing, we did it, and seeding, heavy metal, everything we did it. Finally, we see that they are characterized also molecularly and identified. Then finally, we developed the technology. You can see both aerobic and anaerobic chamber. We had the consortia, and finally we treated it. You see, the construction of these boxes only is the cost, and that they can afford it. So we did 50,000 rupees. We could develop a technology
which was really very successful, both aerobic treatment, anaerobic treatment, and alkaline treatment means because limestone was available, so we give the limestone bed. Very simple technology, but of course for isolating these bacterial consortia, that took time, but finally we could succeed, and you can see the result. You can see the result. In the first day itself, the pH was 3.28 in the control, and it announced in the third day itself up to 5.9, and in the second case, you can see up to 6.4. So just 3 days and our technology worked very well. So now we are putting it into the field so that a major environmental problem, which is destroying the crops, water bodies, everything, you cannot drink it. So we have been able to solve this. So that's what I'm telling that these are the success stories. And also the phytoremediation also we have to do it. But with that also the new technologies have to come up. So shifting cultivation is a big problem in the Northeast, but it is monitoring is a big task. Big technology was not there. So here we developed an index-based automatic approach for shifting cultivation follow and mapping. So this is the decision tree and understanding the patterns of extensive field work we did. And finally, we developed the method and that logarithm, which has been published in the remote sensing, but it is a very standard now, and we can do it very fast, and accuracy level is very high now. So the technologies go, say for example, species richness, you cannot go and survey physically each and every area. So here is an example how you can see taxon of observed photosynthetically active, satellite-based taxon. That one we used as a proxy to the species richness so that we can monitor the species richness. So you can see that plant richness pattern is a function of observed power, photosynthetically active radiation. So all these technologies also have to be developed parallelly, and you can see monitor, you can do that. And here is low cost forest restoration. This is not our work. We have just given a concept how the small interventions can reduce the cost of restoration. So this is the reforestation with very little amount of money. So Professor Pandey, Arun Pandey was telling that our species extinction restoration program. So this is, you can see 1 million species extinction. The sixth extinction is on. So this is an example. What I mean to say when we talk about the restoration, it is not only the ecosystem, it is not only the you can say that landscape or the water bodies, but also it is the population level. So each species they are getting extinct. So that is also restoration and recovery part. So you'll see this is the Ormosia robusta, only one individual when we started the study, but finally we got 3 populations of total 8 individuals on this earth. So we have been successfully able to restore it through different approaches we have taken. As I was telling you, 100 species we could successfully do. 37 institutions, 150 scientists, the great effort, and I thank everybody to that. So even starting from Jaisalmer to the high Himalayas, we have been working on this, and it is a great success story. But now we have moved from the demographic approach to conservation genetics, which we are doing, to conservation genomics now. Say, for example, Google, why the species is becoming really threatened. So from the genomic analysis, we are trying to identify it and how to really restore that. That is also the area of research now. So today's research, tomorrow's application in the field, and that's how we solve the mega problems. So in the right side, I have written that from conventional demographic approach to conservation genetics, which we use in our project, but now we are following conservation genomics. And the value addition of the resources, as you know, that if we really want to be friendly, or we can stay with the nature in a harmony or harmonious way, I think we have to use the less natural resources so that exploitation is reduced, but high value addition will lead to the enhancement in the income and life, the quality of life of the people. So under that approach, we have to utilize our resources scientifically, to develop new technologies so that instead of getting 20 rupees per kilo, we can get at least 33,000 or 30,000 or 3 lakh. Then only the natural resources exploitation will be less and our quality of life will be more. So scientific input is very crucial. This is an example in Meghalaya. I think I presented long back, around 10 years back also. From DBT support, we did it. Lakana turmeric. And this is the oleoresin we produced, and it is now all women, they are doing excellent work now. Also, it is going on the plant, and from 20 rupees a kilo now 33,000 rupees oleoresin they are producing, and now bioactive turmeric, bioactive curcumin also we are now introducing to them.
Similarly, you can see here, chrysophenol functionalized silver nanoparticles, MBRI is active in this. We have been developing various healthcare products. This is an example I will show you from this plant. In fact, we got it from this chrysophenol from lichen, but also it is available in aloe vera and cassia fistula. From that, we can derive this chrysophenol and utilizing that in the urinal catheter. This with this one, when we applied, it enhanced its life. Urinary catheter we put, only second day itself the microbials they come and they colonize, and then you give them antibiotics. They are so resistant to antibiotic that it doesn't work. So on the third day you have to put a new one. So not only it gives the patient difficulty, but also it is costly. So this chrysophenol based catheter, which you have developed now, it is under the clinical trial. You will find that it goes up to 28 days. There is no microbial infection. And simply you see that from the bioprospection of the plants. So this bioprospection is very important. People might say that how long you will do the bioprospection? Biodiversity's potential is enormous. And India has the potential to be a very powerhouse of the bioeconomy. But unless we do this type of things very seriously, it will not only reduce the natural resource exploitation from the wild substantially, but also it will really give very 10 to 15 times fold income to the people. So these are the technologies how it can help. So this is the all scientific proven, and finally we release it. And now last question, I will just talk about how the pollution affects the life. And you know, this is a story of HCH. Which I will just tell you that in very close to Lucknow, this is a banned substance that hexachlorocyclohexane, leaden we say a common name. The gamma part is used actually for this, but alpha and beta, they are simply dormant and they are carcinogenic. They cause cancer and they so this one is from the chemosphere we published. You can see Professor Ruplal and our NBRI, and IITR together we worked for this project, and we have the organism which is through the enzymatic action we degrade the HCH, which is a global problem. So this HCH contaminated soil microbial assisted. So for this you need technology development, alpha beta residues for HCH, and we developed it and tried in the field and proved it, and finally both the phyto as well as microbial remediation it worked. So the thing is, there are pollutions, there are challenges, but if we scientists, we work together and we work seriously, the solutions will be there. But it is not adequate, just do it in the lab scale and leave it there. You must take it to the field and solve the problem. So here, just based upon our own work, I just presented that yes, whether it is the climate change challenges, or it is the biodiversity conservation, or it is the pollution abatement, everything it is possible if we work. Science has a lot of potential. So I thought that if I saw this experience from our own life, which we have been working for over so many years, so the students, actually the future scientists, they can be encouraged. And yes, we must do high science in the lab, and also these high science-based products must go to the field. So that is the stand, and any challenge, let it come, whether it is an environmental problem or it is any problem, scientists can solve it. But yes, we need efforts, and from lab to land transfer should be effective. Thank you so much. And I thank the Academy for selecting me this prestigious award, Professor R.N. Tandon Award, and also inviting me to this program. And giving me an opportunity to share some of my works. My group, you know that it is not my alone. From NEPU, from IIT Kharagpur, Indraprastha University, NBRI colleagues, Mizoram University, Nagaland University, all the people who have contributed, all the partners in the DBT project of the 37 institutions of the prevention institution. Thank you all, and thank you so much. Thank you very much, sir. Many thanks. Your vast experience and this talk will give you the new horizon and new dimensions to the budding scientist, especially in the ecological modeling, population and molecular ecology, chemical ecology, and the impact of climate change on species and ecosystem. We are very much thankful to you for giving such an informative lecture, sir. As we inform that this lecture will be considered as the Professor R.N. Tandon Memorial Lecture Award 2020, and the Academy gives the citation, medal, and the cash prize to the awardee. Sir, we are supposed to, you will come here and physically, and we will give these awards.
but as you have not able to come, but we request to the Professor U.C. Srivastava sir, Treasurer Nasi, to kindly read the citation, and the award money, medal, and the citation will be sent to you as your postal address, sir. So now request to the Professor U.C. Srivastava sir to kindly read the citations. Professor, Director CSIR National Botanical Research Institute, Lucknow, for his outstanding research contribution in the area of ecology, biodiversity, and its conservation. Sir, we congratulate you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Namaskar. On behalf of Academy and our own and the whole community and the Academy will congratulate you for this award, sir. And now moving to the next, I say we can say not the last part because last is the vote of thanks. But before that, we request to our officiating president, Professor Anurag Sharma sir. Dr. Neeraj sir already told sir is presently the professor in the Department of Physics, IIT Delhi. May I request to our officiating president, Professor Anurag Sharma sir, to kindly deliver his presidential remarks to the audience. Thank you, Santosh. Good afternoon. You can hear me? Yes, sir. Okay, fine. All right. So, Dr. Manju Sharma, Professor Barekh, Professor Madhulika Agrawal, Professor Srivastava, Professor Bellare, Professor Amit Ghosh, Professor Arun Pandey, Professor Jitan Thakur, NASI staff, other council members, fellows, NASI staff led by Neeraj and others, and of course, young students who are here in the audience. It's first of all greetings on the World Environment Day and बहुत-बहुत शुभकामनाएं. लेकिन हमने बहुत कुछ सुना इसके बारे में. स्टूडेंट्स ने particularly आप लोगों ने कुछ समझा भी होगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्रीटिंग्स तक तो ठीक है, बट हमें इन चीजों को याद रखना है. Whatever has been said, that we must take with us. And some of the important things that have been said is that we have to work individually. I mean, governments are working, associations are working, but individually we have to contribute towards this conservation of environment, which is very, very important. I was reading somewhere that today we are using an equivalent of 1.6 Earth resources to maintain our lifestyle today. इसका क्या मतलब है कि हमारी जितनी अर्निंग है मंथली उससे हम 60% ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एंड ये जिंदगी चल नहीं सकती इस तरह से. दैट इज वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. So we have to do something, as has been said, that otherwise by the end of this century there'll be hardly any it will be difficult to live. So the other thing which has been said is that 2/3 of the greenhouse gases, and which are the major contributor to the environmental problems, are because of our lifestyle. That means the way we live, the way we consume, the way we use resources is all because of that. So unless we change at the individual level and start thinking whether if I'm using a resource once, can I use it twice? Can I do with the half the power consumption? And so on. I mean, these things are very, very important. और इन सबको हमें सोचना पड़ेगा. मधुलिका जी ने बताया कि triple emergency is going on right now because of not only climate change but also habitat loss and other pressures on the earth, and of course the pollution. All these things are actually related to our consumption. And जैसा डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि हमें इस वक्त गांधी जी को याद रखना चाहिए. गांधी जी ने कहा था कि हमारी जरूरत के लिए काफी कुछ है, लेकिन हमारी लालच के लिए इस धरती पर sufficient नहीं होगा. I mean, earth provides enough to satisfy everyone's needs, but not for everyone's greed. And today, actually, the 60% extra that we are consuming from earth is part of our greed rather than need. Need is, of course, more than enough that we have. So all these things one has to remember and decide at the individual level whether we can contribute to this.
not whether. I mean, we have to contribute to this. Otherwise, the life will become unsustainable in no time. I think in very fast it will happen. So it's very, very important day to remember. But as Professor Srivastava said initially, it is not just a day to day, but it is an everyday day. I mean, every day we should remember that environment is important. I mean, it's not just one day. So I would like to thank all the speakers, and they have done a wonderful job, not only in the environment, but also in biodiversity and conservation and so on. And these are all related to our environment. So with these words, I would like to thank you all. And we had a very nice program today. Yeah, Santosh. Thank you very much, sir. Thank you very much. Very rightly, sir. Almost हम लोग 50 साल हो चुके हैं now वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हुए. The time is not for the what कि हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं. हमें ये भी एनालाइज करने की जरूरत है कि हम इतने सालों में बनाने के बाद हम लोगों ने कुछ भी हमारे पास कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया और इससे हमें कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ. एडवांटेज फॉर सेलिब्रेटिंग दिस प्रोग्राम हमारा ये भी होना चाहिए कि व्हाट वी हैव अचीव्ड. हमें हमेशा आगे की प्रॉब्लम्स ही दिख रही है सर. अचीवमेंट्स क्या हुए उसके बारे में बहुत ही लिस्ट कम डेटा है कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स. So thank you very much for giving the presidential remarks. And now I request to our General Secretary Outstation, Professor J.S. Bellare sir, to kindly propose the vote of thanks to the audience as well as the guests and all the speakers. Over to Professor Bellare sir. Thank you. Thank you very much. I hope I'm audible. Yes, sir. Great, great. So it was a lovely morning and a very very important topic. And above all, let me thank all the students who took time to come here. And the one message which I think we all want to give you is that be the change you wish to see, and try and implement some of what you have learned today in terms of remedying the environment, saving it. Dr. Barik talked about celebrate, protect, and restore. Dr. Jitendra Kumar talked about the remedial effects of plants, how temperature affects. Professor Pandey explained the role of rare plants and the need for cyber biodiversity data and sample storage. And of course, Dr. Anurag Sharma in his presidential role, Dr. Manju Sharma, Dr. UC Srivastava, Dr. Neeraj Kumar, and Santosh Shukla, and Dr. Madhulika. Thank you, and all the other council members and distinguished scientists present. Thank you very much for this lovely set of talks and the award lectures. And my congratulations on behalf of everybody to the awardees and the named lecture speakers. With that, we come to the end of this morning's program. I encourage students to visit the Ganga Gallery. Those who are not there can still do so. Just search for Nasi Ganga Gallery and you will get a lot of information on the web. You can do a virtual tour there as well. So with that, thank you very much and have a good afternoon. Bye now. Thank you very much, sir. Many, many thanks. And we are grateful for your kind message and your supporting guidance as cooperation, sir. Our headquarters, Madhulika madam, and other office members of the NASI, as well as this staff, we are very much thankful for making this program successful. Even we are very much delayed behind in the schedule, and the students are, I think they are very much hungry for waiting for the lunch. So before making any delay, I again thanks to all, and my special thanks to kindly convey my regards and thankful to the teachers who has making the arrangement to come invite the students to hear the students, because already the summer vacation is going on, but we can see the full strength of the students is here. To kindly give my thanks and regards to your principal. My special thanks to the teacher, Scott teachers, especially Dr. Dr. Ghoshji, Dr. P.K. Ghosh, Dr. Lalji Yadav, and Mr. Sanjay Srivastava from Tagore Public School, Lalji Yadav from the Colonel Inter College, and Dr. P.K. Ghosh from the Anglo-Bengali Inter College, and other teachers, staffs who has come over here. We are very much thankful to you. And last, not the least, I request to the Dr. Neeraj sir to kindly just give a summary of the aim for this while you want. एक लाइन तो हो चलो माइक का है माइक
Thank you, Dr. Santosh, for very successfully concluding this session and coordinating this hybrid event. And once again, we are very much thankful to everybody, all the students, all the participants, all the distinguished speakers, as well as our learned council members and president, vice president, general secretaries, and all others. We are very much grateful to them. Thank you. World Environment Day. Yes, we will celebrate again and again and we will follow the instructions now. सबसे जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं. पेड़ ही सबसे सीधा और सटीक समाधान है. अगर बड़े-बड़े पेड़ वृक्ष अगर लगाए जाएं तो हम लोग इस एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकते हैं. इस प्रस्तावना के साथ और इस आशय के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हम सभी पेड़ लगाएंगे. थैंक यू. Thank you, sir. Now kindly allow us to log out this session, sir. Thank you very much. Namaste. Namaste, sir. बंद कर दो ये जैसा. हाँ, आप सब लोग एंड मीटिंग कर दो. सब बंद कर दो.